हेलो जस्ट इन टाइम यस वी आर बैक ऑन ऑलमाइटी ब्लूज एफसी। इस बार शायद खाली ऑलमाइटी ब्लूज एफसी में है। आई नो लास्ट स्ट्रीम वाज अ लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन फॉर अ फ्यू पीपल, लेकिन यार वो जो फ्यू पीपल है ना भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कभी कभी हो जाती है गलती, टेक्निकल एरर हैपन और समटाइम्स ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज वो पता लग जाता है भाई which guys are not for Almighty Blues FC because a few people have unsubscribed. यार याद रखिए, it's always a fan channel for all to see and talk about that. Yes, kick off होने ही वाला है and yes, hopefully आप लोग सब जो first of all people have joined, thanks a lot for joining. Again, do not forget to hit that like button and शेयर करिए, हो सके तो शेयर करिए। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में जस्ट अभी शेयर किया है, सो इफ यू कैन हिट दैट लाइक बटन द कम्युनिटी पोस्ट, इट विल रियली हेल्प द एल्गोरिथम पीपल। कम ऑन, लेट्स हैव मोर पीपल इन। वो कैसे होगा? आप लाइक करिए स्ट्रीम, शेयर करिए एज वेल एज लाइक द कम्युनिटी पोस्ट, जैसे मैंने बोला है। एंड देयर आर सम सरप्राइजेस। यस, मैंने लाइनअप पे ज्यादा रिएक्ट तो नहीं करना है बिकॉज किक ऑफ होने ही वाला है, विल रिएक्ट टू द मैच डायरेक्टली, बट वी हैव लिटरली अ फ्यू सेकंड्स। हाँ, मेरा अभी तक शुरू नहीं हुआ मैच, तो भाई ये है मैच लाइनअप। तो सरप्राइज प्रिटी श्योर यहाँ पर थोड़ा बहुत सरप्राइजेस है, बट हाँ, वैन बिसाका स्टार्टिंग, पता नहीं क्या बोलोगे आप लोग, आर यू सरप्राइज विद दैट और नॉट? मुझे लग रहा था दैट डालो माइट बी प्लेइंग, बट डालो आई थिंक बेंच पर भी नहीं है जहां तक मैं देख रहा हूँ। लेट मी जस्ट चेक इट अप। डालो बेंच पर है, ओके फेयर इनफ। तो वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। लूक शॉ काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड कि सेंटर हाफ में खेलते, लेकिन फ्रेड और कैसेमीरो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बार्सिलोना के लिए एनी बिग सरप्राइजेस? अलोंसो सेंटर हाफ, दैट इज अ बिग ह्यूज सरप्राइज इन फैक्ट। लेकिन हम जानते हैं भाई, जावी बॉल, ही नोज व्हाट इज डूइंग, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। एंड यस, लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आई अप्रिशिएट जो भी लोग जुड़े हैं to kind of बी there, and of course हम react करेंगे। we are going to have Fateh as well as Shrey joining midway through। भाई सब लोग hit that like button on the community post, और अगर आप शेयर कर सकते तो और भी ब्रिलियंट है, बट इस स्ट्रीम पर तो डेफिनेटली लाइक करना। आई वांट यूनाइटेड टू विन टुडे बिकॉज बट बार्सिलोना सीम्स टू बी इन अ बेटर शेप एट द मोमेंट। आई थिंक बार्सिलोना, सच में बोलो तो कैंप न्यू है ये वाला, तो आई विल गिव एडवांटेज बार्सिलोना, लेकिन विद अलोंसो प्लेइंग। अब हो सकता है द ओनली रीजन व्हाई अलोंसो इज प्लेइंग देयर इज बिकॉज ऑफ वो ये प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस, हाइट फैक्टर, कहीं ना कहीं आई थिंक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है विद वेगहॉर्स्ट बीइंग देयर। आई एम जस्ट गेसिंग, आई डोंट नो, आप लोग बोलिए व्हाट कैन बी द रीजन देयर, बट अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। यार मेरा ट्विटर में एक ट्वीट जाता है, so what you can do is, if people who are on Twitter can retweet that tweet, लेकिन they can quote tweet with the link copied onto that. That'll be brilliant, absolutely, apart from liking the community post as well as liking the stream. Jabbar bhai, great to see you as well. Evolution Gaming Lux, yes, 10th game पे definitely है। क्या बोल रहे हो? मतलब स्कोरलाइन प्रेडिक्शंस, कम ऑन, कैसेमीरो प्रेइंग, लेट मी नो स्कोरलाइन प्रेडिक्शंस एवरीवन चैट में, कम ऑन। लेवेंडोव्स्की है ना, ऐसे कर रहे हैं, लिटरली ऐसे कर रहे हैं भाई। लेवेंडोव्स्की इज लाइक, भाई आई एम वेटिंग। यस, सौरदीप इज सेइंग लेट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड स्कोर लाइन प्रेडिक्शंस भाई, स्कोर लाइन प्रेडिक्शंस चैट, कौन स्कोर करेगा? मैंने बोला था इट विल बी अ नैरो विक्ट्री फॉर बार्सिलोना, और लुकिंग एट द लाइनअप, अब मैं बोलना चाहूंगा, यस, एज मच एज मैं अलोंसो फैन हूं, आई फील द फैक्ट इज विद वैन बिसाका प्लेइंग देयर, मैनचेस्टर यूनाइटेड काइंड ऑफ टाइट रहेगी। तो मुझे लगता है इट माइट बी 1-1। आई एम गोइंग विद 1-1 स्कोर लाइन आज रात को। और यस, द किक ऑफ हैज स्टार्टेड नाउ भाई साहब। दिस इज सम एक्साइटमेंट। अलोंसो पहले ही क्लियर करते हुए कि भाई ऑलरेडी 90th मिनट में खेल रहे हैं सेंटर हाफ अपने अलोंसो, बट आई लव अलोंसो ब्रो, यू ऑल नो दैट। कम ऑन यूनाइटेड हर्जस, एब्सोल्युटली, ऑल द बेस्ट टू यू एज वेल ब्रो, ऑल द यूनाइटेड फैंस एंड बार्सा फैंस बोथ। And Ashish, yes, absolutely, definitely a Barca fan. All the best to you as well. 3-0 Man United. Alonso center half, reason मैंने दिया, लोकेंद्र, the only reason I see खेल रहे हैं, और पहले ही भाई साहब, this was an early chance there, and that is something that हम जानते हैं that Eric Ten Hag system, यार, you have to be careful of if you are Barcelona। कहीं ना कहीं वो एक है, ऑन द ब्रेक एक डायरेक्ट क्रॉस आया, एक वन इन द बॉक्स, एंड दैट इज इट। वेल, अलोंसो सेंटर बैक, आई थिंक द रीजन इज, दो रीजन हो सकते हैं। वन, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वो जनरली प्रीमियर लीग में खेला हुआ है बहुत, ही माइट हैव प्लेड रैशफोर्ड वाला चीज, व्हिच आई डोंट एग्री विद। सेकंड रीजन बीइंग दैट वेगहॉर्स्ट, नाउ अबाउट वेगहॉर्स्ट वी ऑल नो, हाइट है वहां पर, आई थिंक इज द मेन रीजन मोर इंपॉर्टेंटली। लेकिन यहाँ पर काउंटर हो रहा है बारसा का ऑन द अदर हैंड, एंड लेवेंडोव्स्की प्लेइंग इट ऑन द राइट विंग, राफिनिया क्या करेगा भाई साहब? राफिनिया गिविंग इट सेंट्रली, लेकिन वेल क्लियर्ड देयर वहां पर बाय मैन यूनाइटेड। एंड ऑफ कोर्स रिमेंबर मैन यूनाइटेड वेयरिंग व्हाइट आज। आई थिंक बारसा विंस 2-1 एंड और इट्स अ ड्रॉ। ओके, मैं देख रहा हूँ ड्रॉ होगा आज।
लेकिन स्कोर ड्रॉ, एंड दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट. बट अगेन इफ यू कैन हैव मोर पीपल ज्वाइनिंग इट विल बी ब्रिलियंट. कैसे होगा भाई? सब लोग जो भी देख रहे हैं लाइक कर दीजिए, और हम लोग पूरा मैच को रिएक्ट करने वाले हैं. एब्सोल्युटली हम रिव्यू भी करने वाले, होपफुली विद ऑल योर हेल्प later on. So if you can give a like to that community post, मैंने डाला है community post में just about 5 minutes ago, तो that will be absolutely brilliant. Nothing can beat that. लेकिन हाँ बार यार भाई साहब countering, this is going to be total counter attacking football. I'm telling you at its best. भाई इंटरेस्टिंग रहेगा. एक सेकंड दीजिए मुझे, जस्ट अ सेकंड. ओके, आई थिंक फतेह विल बी जॉइनिंग इन अ फ्यू मिनट्स ओनली. जस्ट गिव मी अ सेकंड. एक सेकंड ना यार. टर्स स्टेगन यार, एक और, वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट टर्स स्टेगन, राइट? टर्स स्टेगन इज वन दैट आप डेफिनेटली यू नीड टू टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ. भाई एक सेकंड के लिए कैमरा बंद किया तब तक दो जन ड्रॉप कर देते. इट्स ओके ब्रो, इट्स ओके, आई एम अ ह्यूमन. कोई नहीं, मच लव फॉर एवरीवन कमिंग ऑन यार. होता है, दांत में कुछ अटक गया था. आई जस्ट हैड अ वेरी वेरी लाइट डिनर जल्दबाजी में. फॉर पीपल हु नो दैट आई डूइंग बैक टू बैक स्ट्रीम्स ऑलमोस्ट यार, ऑलमोस्ट डेली. लेकिन हो जाए, आज कुछ गजब हो पर मेरी टीम ना हारे. चलो कोई नहीं. चलो भाई, मैं अगेन आई एम लेट मी सी, लेट मी एक सेकंड कर सकता हूँ. सो आई एम गोइंग टू ट्वीट नाउ विद दिस लिंक. ठीक है, मैंने एक ऑटोमेटिक ट्वीट तो गया ऑलरेडी विच गोज ऑन ट्विटर लाइव. ठीक है, लेकिन मैं एक और ट्वीट करने वाला हूँ विद दिस लिंक. इफ यू कैन रीट्वीट माय कोटेड ट्वीट, दैट विल बी ब्रिलियंट. ओके लेट्स सी, एक सेकंड ना. चलो, मैं सिर्फ अभी अभी किया हूँ, जस्ट अबाउट. ठीक है, एक सेकेंड. हाँ, तो आई थिंक इट शुड बी देयर नाउ. मे बी यू कैन सी इट. चलो, हाँ मैंने अभी अभी ट्वीट कर दिया है. सो होपफुली पीपल विल ज्वाइन इन. चलो कोई नहीं. भाई नाइस. यू नो व्हाट, मैन यूनाइटेड हैव टू बी रियली केयरफुल. लेकिन क्योंकि यार आई नो काउंटर इज वन थिंग, लेकिन वो काउंटर पे काउंटर कर सकती है यार. बारसा भी, बारसा के पास भी, रिमेंबर, वी ऑल फॉरगेट. देखिए रिमेंबर राफीनिया, एज मच एज राफीनिया आप बोलोगे इज नॉट रियली लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस. राफीनिया एक बंदा है जो लीड्स में ही यूज्ड टू एक्चुअली स्ट्राइव ऑन काउंटर. अरे बाहर रफीनिया की बात करती, बाहर चले गया बॉल. कोई नहीं, होता है. मैं इट्स नॉट कमेंटेटर्स कोर्स, डोंट वरी अबाउट दैट. बट अगेन भाई अराहो, बैटल यार, बैटल्स देखने का मन है आज, प्रॉपर बैटल्स. अराहो वर्सेस सैंचो, और ये वाला बैटल अभी तक तो भाई अराहो जीत गया है. ठीक है, लेकिन ये मिनी बैटल था. मेजर बैटल ऑब्वियसली विल बी थ्रू आउट द गेम एज वेल एज द टाई, वो तो हम देखेंगे एब्सोल्युटली. लेकिन हाँ भाई, क्या लगता है एवरीवन इन द चैट, व्हाट इज द मेन बैटल जो आप लोग को लग रहा है एज मैच स्टार्टेड? भाई मुझे लग रहा है दैट अराहो माइट बी अ डिफरेंस मेकर यार, कंसिडरिंग कि राइट विंग में रफीनिया है. रफीनिया और मैन यूनाइटेड अगर काउंटर करती है, रफीनिया माइट काउंटर टू काउंटर, वो पॉसिबल होता है विद अराहो बीइंग द स्ट्रेंथ. और एक बॉल विन कर लेगा, बूम, एक गया. मे बी कैसेमीरो, इफ यू कैन ब्लॉक हिम ब्रिलियंटली. कि कैसेमीरो ने एक ड्राइव किया एंड ही कुडंट डू दैट राइट नाउ इस मोमेंट में. तो लेकिन देखते हैं क्या होता है. मतलब काफी इंटरेस्टिंग है द प्लॉट ऑफ द मैच आज. अच्छा, मैन यूनाइटेड, अच्छा मैन यूनाइटेड एज हम एक्सपेक्ट किए थे भाई, बैक थ्री में जा रही है. ठीक है, तो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज व्हिच वी हैड स्पोकन इन द प्रीव्यू एज वेल. इन द गेम, मलाशिया काइंड ऑफ बिकम्स अ विंगर, एंड देन बाकी लोग टक इन कर लेते हैं सेंटर बैक. ठीक है, तो थ्री सेंटर बैक जैसे दे आर प्लेइंग इन द गेम. और इन अ सेंस बारसा भी करती है. तो दैट इज समथिंग दैट आई थिंक मैच कर रहे हैं मैन यूनाइटेड. एंड एरिक टेन हाग, वी नो दैट ही इज वेरी फ्लूइड इन हिज टैक्टिक्स एज वेल एज फ्लूइड फुटबॉल खेलना चाहते हैं. भाई सैंचो hasn't been able to beat रफीनिया, ये क्या हो गया भाई? और अराहो हिटिंग द बॉल जैसे कि भाई तू एग्जिस्ट नहीं करता. अराहो मैन, दिस गाइस नेक्स्ट लेवल. भाई साइट मैं तो सोनी 10-2 में ही देख रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट यार आशीष. साइट तो मुझे शायद आई वुड नॉट बी द राइट पर्सन फॉर यूरोपा लीग मैच साइट. लेकिन ट्विटर में जनरली आशीष, व्हाट आई वुड सजेस्ट इज जनरली ना, ट्विटर में पीपल शुड हैव अ अकाउंट यार. नॉट दैट ट्विटर इज ग्रेट. भाई एक सेकंड, क्रॉस आया और ऑलमोस्ट, अरे मैन यूनाइटेड ऑलमोस्ट गेटिंग इट थ्रू द बारसा डिफेंस. भाई रैशफोर्ड द डेंजर मैन इज वेरी मच देयर. अभी तक लग रहा है दैट इट इज बेसिकली मैन यूनाइटेड अटैक वर्सेस बार्सिलोनास डिफेंस, और बार्सिलोना काउंटर कर रही है, मतलब व्हिच इज वेरी सरप्राइजिंग. लेकिन अगेन रफीनिया डेवलप कर रहे हैं.
रफीनिया एंड अराहो साथ में कर रहे हैं। हाँ, ट्विटर में इसलिए बोल रहा हूँ आशीष, और ट्विटर में क्या होता है ना, वंस यू हैव अ ट्विटर अकाउंट, यू कैन गो टू द ट्विटर सर्च स्ट्रिंग, जो सर्च बार होता है ना, उसमें आप डालिए बार्सिलोना वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड लाइव, आपको मिल जाएंगे थोड़े बहुत लिंक्स। Haaland finally settling into City gameplay, also Super Jack proving his season. Bhai Neil, Haaland, to be very honest, I don't agree with Jamie Carragher, जो Jamie Carragher ने बोला था. I think me and Nidhi spoke the other day about it. I think that someone who scores like 30 goals in an entire season, all competitions, bhai, how can you question him? Come on. You cannot question him when February mid में ही आपके 30 goals हो गए और 20 goals in the league, 25 goals in fact. तो आई एम नॉट गोइंग टू क्वेश्चन दैट बिग टाइम यार. हाँ, 2-3 गेम्स में होता है, बट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द वर्ल्ड, और मैं बोल रहा हूँ हिस्ट्री का भाई. मैंने बहुत बार बोला है, बहुत अलग स्ट्राइकर है, बट डीडियर ड्रॉग्बा बहुत बार फ्रस्ट्रेशन भी देता था यार. लोग भूल जाते हैं, कोई भी यार दूध का धुला नहीं होता है. व्हेन यू नो व्हाट आई मीन, राइट? मतलब एवरीवन हैज अ रूम फॉर इंप्रूवमेंट, एंड दैट इज व्हाट हालैंड हैज, बट डजंट मीन इज बैड और डजंट फिट सिटी स्टाइल. नो वे क्लोज, इन फैक्ट इज वेरी गुड. आई वुड मतलब बाइट योर हैंड ऑफ अगर आप कोई भी और टीम जाती है हालैंड के लिए. कुंडे को राइट बैक रखो यार, अराहो को सेंटर बैक रखो. नहीं, एक्चुअली आशीष, आई अग्री विद द फॉर्मेशन जो है ना अभी. आई थिंक अटैक कर रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई अग्री, लेकिन इंपॉर्टेंट है आउटलेट, और आउटलेट अराहो इज नॉट बैड एक्चुअली. और वो रीजन वही है, पता है हमें, राशफोर्ड का रीजन है भाई. एक सेकंड, लेवेंडोव्स्की द बॉल, लेवेंडोव्स्की द बॉल एंड ही गॉट शॉट एंड नाइस सेव यार. भाई साहब, डेविड डेया, अर्ली सेव बाय डेविड डेया हियर, एंड दैट वाज अ काउंटर, बारसा काउंटर. वो शुरू कहां से हुआ था? शुरू हुआ था स्विच ऑफ प्ले फ्रॉम अराहो साइड, रिमेंबर. That is why I said Araujo एक outlet होता है. Big up to Luman. How are you? All the best for the game. Manchester United fan in the house. What do you think? What are your score predictions? Let me know comments में. हाँ, ट्राई करिए आप ट्विटर में बेसिकली सर्च हैंडल जो होता है ना, उसमें सर्च बार में भाई, साथ साथ में मैं बेसिकली आई एम जस्ट हैविंग अ लाइट वेरी लाइट डिनर. By the way, for people who are wondering why am I wearing Chelsea, the reason is because I'm very low with the Chelsea's performances. इसलिए I'm wearing Chelsea. And obviously, I'm a Chelsea fan as well. But of course, a Premier League, La Liga, Serie A, Liga and Bundesliga fan as well, for all of you who do not know. Plus, ये मेरा नया jersey भी, shout out to Sports Hub, but definitely good jersey which I finally decided to buy myself. Nice shot, yeah, nice shot था. Lewandowski did well. Araujo man, Araujo again. देखिए आशीष, Araujo is very crucial for you to kind of be that warrior. और भाई साहब, Araujo from the outside of the boot man. हॉलीवुड स्ट्राइक लाइक अ डारी ऑलवेज स्ट्राइक है, लेकिन हुआ नहीं, कोई नहीं. लूमैन बोल रहे इट विल बी अ ड्रॉ. ओके, अगेन पीपल, एवरीवन वाचिंग और कमिंग ऑन टू द स्ट्रीम, स्टिक अराउंड भाई. हमने पूरा करना है वॉच अलोंग, एंड ऑफ कोर्स डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, सर्टेनली हेल्प्स. एंड मुझे मालूम है 2 घंटे पहले वाली स्ट्रीम आई मिस्टेकनली पुट इट ऑन बोथ द चैनल्स, बट इन अ वे इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. सो पीपल गॉट टू नो अबाउट ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस भी, वेयर वी डू क्रिकेट एंड फुटबॉल. यहाँ पर हम खाली फुटबॉल करते हैं, वो अलग से एक वन ऑफ था. तो दैट्स व्हाट आई पुट इन द कम्युनिटी पोस्ट. हाँ, बाय द वे, do not forget to hit that like button on the community post. By 10 people are watching, let me have right away 10 more likes on the community post and the stream. Hopefully we can get there, so that algorithm will help. Let's actually pump it up also for your team. Let's put it that way. When City sign new player, they start to perform. Neil bol rahe hai. Well, in second season, look at Sane, Bernardo, Laporte, Ake now this season, Jack. Imagine next season Haaland and Alvarez. हालैंड तो आई बिलीव इज ऑलरेडी देयर यार, मैं तो बोलना चाहूंगा नहीं, बट एनीवे, बारसा ऑन द अटैक. यहां पर मिस्टेक बाय वैन बिसाका शुड हैव डन बेटर, सच में बोलो तो. गावी विद द बॉल, लेकिन नहीं, आई थिंक वेल डिफेंडेड यहां पर बाय लुक शॉ हेडेड द बॉल, लेकिन इट कम्स बैक टू बारसा. इट कुड बी अ गोल. नहीं यार, वैन बिसाका सेविंग मैन यूनाइटेड एज समहाउ. अरे भाई साहब, दिस इज लाइक क्रेजी. प्रॉपर बैटल चल रहा है. फाइनली फ्री किक दे दिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फ्रेड ने. And Gavi has won the free kick. भाई साहब, this is a brilliant position for Barcelona. फरासत भाई, yes, Juventus का भी गेम हो रहा है. A lot of games is happening, इसलिए मैंने डाला है the poll, do check it out. क्या हो रहा है भाई, बाकी गेम्स अगर फॉलो करे फरासत और anyone, do let me know the updates यार. हो सके तो मैं भी देखता हूँ साथ साथ में, लेकिन अभी because I'm watching it online ना, थोड़ा मुश्किल है. देखते हैं.
Alonso might take the free kick, I feel. नहीं, पोजीशन Alonso के लिए है भाई साहब. Alonso might take the free kick. Brilliant. You all know Alonso fan तो हूँ यार मैं. हाँ मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा ग्रेट है, लेकिन कम ऑन, हो सकता है इसीलिए शायद लिया यार. मतलब सेट पीसेस, डिफेंडिंग एंड अटैकिंग, ही इज क्वाइट गुड. वी ऑल फॉरगेट दैट. चेल्सी फैंस रिलेट करेंगे उससे. एंड दिस इज द अलोंसो. थोड़ा सा अगर पीछे होता ना बेटर होता. पोजीशन वाइज ऑलमोस्ट परफेक्ट अलोंसो के लिए. वैन बिसाका पुअर. या ही शुड हैव क्लियर्ड इट फर्स्ट टाइम. 3 positive from. अरे भाई नील, आई जस्ट कम टू जस्ट अ सेकंड. आई स्टार्ट दिस क्वेश्चन. आई जस्ट वांट टू गेट थ्रू दिस फ्री किक. भाई साहब लेवेंडोव्स्की भी हो सकता है. लेवेंडोव्स्की भी बहुत ही सीरियस लुक दे रहा है, लेकिन आई फील अलोंसो ही होना चाहिए. अलोंसो ही होना चाहिए. क्या लगता है यार, क्या गोल नो गोल? अलोंसो इज अ गुड फ्री किक टेकर, बट कितने दिन हो गए उसको ऐसे फ्री किक्स लिए हुए लॉन्ग. अरे बैन जस्ट अबाउट. कोई नहीं. वेल ट्राइड बाय अलोंसो. एब्सोल्युटली भाई. उसी बात पर सब लोग लाइक बटन दबा दीजिए. अगेन रिमेंबर, अभी तक जो दिख रहा है हमें, बार्सिलोना काउंटर कर रही है, मैनचेस्टर यूनाइटेड अटैक कर रही है, but in the last 2 minutes, because of Van Bissaka, the momentum has slowly but surely shifted to Barcelona in the last 2 minutes. अब अगेन आप 2-2 मिनट से नहीं देख सकते हो. जो सब लोग बने रहना. अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब. ऑलवेज रिमेंबर, इट्स अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी. और अगर कम्युनिटी पोस्ट लाइक करे तो ब्रिलियंट है. चेल्सी वर्सेस डॉर्टमंड में एक बिगेस्ट पॉजिटिव वाज रीस जेम्स बीइंग रीस जेम्स प्रॉपर. सेकंड हाफ में रीस जेम्स वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. क्या रन पे गया, क्या फ्री किक लिया, क्या स्ट्रेंथ दिखाया डिस्पाइट बीइंग ऑन येलो कार्ड. यहां पर एक टैकल रहा भाई. फ्रेड हैज गॉट थ्रू द टैकल, लेकिन रेफरी बोल रहे नहीं, आई एम कॉलिंग इट बैक फॉर फ्री किक व्हिच गोस टू बार्सिलोना. लेकिन हाँ, तो दैट वाज द फर्स्ट वन फॉर मी कि रीस जेम्स. अच्छा, सेकंड वन वाज मतलब आई डोंट नो इफ इट्स अ रियल पॉजिटिव, लेकिन चांसेस क्रिएटेड, फ्लूइड फुटबॉल डेफिनेटली देखने को मिला चेल्सी में. ठीक है, और मैं आई एम एड्रेसिंग दिस कमेंट ऑफ नील और क्वेश्चन. तो मच मोर फ्लूइड फुटबॉल, मच मोर काइंड ऑफ चांसेस. आई नो वो दैट कुड हैव बीन टर्न्ड एज अ नेगेटिव, क्योंकि हम चांसेस लेते नहीं और लिया नहीं येट अगेन फॉर सो मेनी मैचेस, आई नो. और द थर्ड पॉजिटिव वाज, आई डोंट नो, मे बी पॉटर फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा ही वाज लुकिंग लाइक थोड़ा सा ज्यादा, क्या बोलते हो, मतलब जस्ट अबाउट मोर एजिटेटेड, ज्यादा एक्ट टेकिंग नोट. तो आई एम गेसिंग देयर माइट हैव बीन मोर कन्वर्सेशन दैट मैं बोल सकता हूँ. आई थिंक दीज आर द थ्री पॉजिटिव्स आई वुड टेक फ्रॉम द गेम, ऑनेस्टली स्पीकिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट नो, मतलब मे बी, जस्ट मे बी आप बोल सकते हो दैट अगेन वन मोर मैच जहां पर मोड्रिक, फिलिक्स और हैवर्ट्स इज नॉन पॉजिटिव, बट बेसिकली स्पीकिंग फॉरवर्ड लाइन एक दूसरे के साथ खेली. दैट्स व्हाट आई वुड से. लेकिन हाँ, 3-4 पॉजिटिव डेफिनेटली थे. कुलीबाली मे बी, कुलीबाली इज ह्यूज पॉजिटिव. तो 4-5 मैं बोल दिया एक्चुअली. एनीवे कोई नहीं. ओके भाई, यहाँ पर अगेन कमिंग बैक टू द मैच, वरान प्रेस किया गया वरान को प्रॉपर. या पता नहीं यार नील, आई एम नॉट श्योर व्हाट इट इज. फॉर मी शोइंग इज 9 एज वेल नील, बट इट डजंट मैटर. भाई अगेन आई नो इट्स एब्सोल्युटली ग्रेट, और मैं बोलना चाहूंगा भाई, वी हैड बिकम, आई डोंट नो इफ इट्स शोइंग 7300. वी हैड बिकम 7300. यस, आज जो पहला स्ट्रीम किया ना मैं, इट वाज अ क्रिकेट एंड फुटबॉल स्ट्रीम. इट वाज मेंट टू बी एन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस, जहां पर हम दोनों की बातें करते हैं. बट बिकॉज ऑफ StreamYard ग्लिच, इट केम ऑन बोथ द चैनल्स. उसके देखकर क्यों, जस्ट बिकॉज पीपल गॉट अ डबल नोटिफिकेशन, भाई 6-7 लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया. कैन यू बिलीव इट? देयर आर सच पीपल. सो इन अ स्ट्रेंज वे मैं रिग्रेट नहीं करता हूँ. आई थिंक इट्स गुड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी, एंड यू गाइस आर पार्ट ऑफ द ऑलमाइटी फैम. तो आप लोग अगर जस्ट बिकॉज यू गेट 2 नोटिफिकेशंस इंस्टेड ऑफ 1, ठीक है, कभी कभी एक भी नहीं आते, तो उससे आप अगर अनसब्सक्राइब कर रहे हो, तो आई डोंट नो व्हाट टू से. वहां पर क्या ही तो मैं बोलूं. हाँ, बट हुआ, 6-7 लोगों ने अनसब्सक्राइब किया जस्ट बिकॉज दे गॉट डबल नोटिफिकेशन फॉर द वन स्ट्रीम आउट ऑफ 800 वीडियोस इन द टू चैनल्स. बट एनीवे, दैट इज व्हाट लाइफ इज, इट हैपेंस. नहीं, वैन बिसाका देखो, आई डोंट थिंक, ऐसे बोलोगे, आई नो आप जो कर रहे हो जबार भाई, बट इट्स जस्ट दैट वैन बिसाका, मतलब रिसेंटली अगेन इज नॉट प्लेड इन द हाई प्रोफाइल गेम्स. रिसेंटली रिमेंबर अच्छा किया था 1-2 गेम में, देन अगेन डालो केम बैक, रिमेंबर. तो कहीं ना कहीं वो भी है. अभी देखो बैक फोर खेल रहे हैं,
but when the ball is in the opposition half, they go back three. Man United giving the ball away almost, लेकिन नहीं. हाँ, they gave the ball away यार. अरे यार, come on. Okay, let me see. Hey, फतेह फतेह कहाँ हो फतेह? फतेह is coming. चलो, anyway. Oh, that was well done by Manchester United. Bhai Sahab, I'm telling you, Weghorst is not bad. Huh? Weghorst has the dirty elements in him. अब proper Premier League में भी किया था. I remember in Burnley, he knows how to play that. And of course, the Dutch striker knows Erik ten Hag what you expect from him. तो वो expect help करता है. What a touch from कुंडे यार, बहुत ही important touch. मैं तो बोलता हूँ अगर वो touch नहीं होता, Manchester United were through. Rashford in that case. But anyway, for the timing, Barca ने बचाया है. I must say, I have been more impressed with Manchester United right now than Barcelona. Yes, Araujo ने एक दो बहुत अच्छा आउटलेट रखा है, as well as basically he has been quite physical. Yes, कुंडे ने अभी बहुत अच्छा टच किया, गावी ने एक फ्री किक जीता था, but apart from that, I think it's all Man United. सच में बोलूं तो अभी अभी के लिए, again the way I see it, क्योंकि Man United का गेम को सूट करता है. बट बारसा ऑन द अदर हैंड, मैं बोलना चाहूंगा फॉर पीपल हु माइट थिंक दैट बारसा पोजीशन फुटबॉल ही खेलना चाहिए. नो, with Rafinha being there, it does not mean it's bad. Rafinha has that thing. He can be an outlet in a counter attack as well, in my opinion. If Premier League gets refs from other nations, Neil is asking, will it reduce the error and take out emotions and favoritism if there's any form of a referee? Yeah, I know. बहुत हुआ, एंथनी टेलर का हुआ शायद. अरे भाई साहब, व्हाट अ वॉली शॉट यार. Pedri with a volley shot, brilliant one. Brilliant volley shot from Pedri. Come on, come on. Bhai, again, I request each and everyone here, first of all, thanks a lot for being here. Hopefully आप लोग बने रहे लास्ट तक स्ट्रीम में. बट साथ साथ में आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है. अगर शेयर कर सकते हैं, बीट ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स, बीट इन योर ट्विटर. यस, ट्वीट भी किया है मैंने. इफ यू कैन रीट्वीट दैट, इट विल बी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, क्योंकि मैंने लिंक भी शेयर किया है मोस्ट रिसेंट ट्वीट में. so that people know that we are live. और YouTube कैसे एल्गोरिथम रखता है भाई, अगर आप जो लोग ज्यादा लाइक्स करोगे और मैं कम्युनिटी पोस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रीम, तब YouTube रिमाइंड करेगा बाकी लोग को और ऑटोमेटिकली पॉपअप होंगे उनके. दैट्स हाउ इट इज. होपफुली द रिमेनिंग 7290 people come on and let's, yes, for people who have unsubscribed in the previous stream, please DM me bro, please explain me. दो नोटिफिकेशंस आकर आप unsubscribe कर दियो 6-7 लोग, बट कोई नहीं, होता है भाई. बारसा क्रॉस किया, लेकिन डाविडिया वेरी मच कैचिंग प्रैक्टिस फॉर हिम. आई डोंट थिंक इट वाज सो इफेक्टिव, बट कोई नहीं, एटलीस्ट दे वेंट क्लोजर रादर. यूनाइटेड आर लूजिंग द सेकंड बॉल. हाँ, लेकिन द फर्स्ट बॉल आई थिंक इट्स मोर ऑफ यूनाइटेड देन बार्सिलोना डेफिनेटली रिएक्ट अच्छा कर रही है, लेकिन आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई वुड से जैसे खेल रही है ना, इट सूट्स मैनचेस्टर यूनाइटेड. फतेह फतेह फतेह, व्हाट्सअप ब्रो, क्या हाल है? Yo, man, yo, I think it's been a fast game, isn't it? Yeah, it's been kind of end to end, but on the other hand, I was expecting Man United to counter. I think Huh. 20 मिनट्स में से Yeah, 13 मिनट आई थिंक बारसा ने काउंटर किया है और मैन यूनाइटेड Barca. हैव पोजीशन. Yeah, and I think, but also Manchester United have been very comfortable. Like, some Man U fans were confident that okay, Ten Hag ball, and like we've gotten the hang of it. So it's clear. Like, I think it's visible, and It's the interesting confidence यार फतेह. I think they are playing with confidence. confidence as a team ना, so Yeah, that yeah, matters a yeah, lot. yeah, yeah. But by the way फतेह, Oh, यहाँ पर yeah. लाइनअप, are you not surprised? Alonso playing center half, Weghorst may be the factor because Weghorst के पास height है. Other than that, I'm sure he's not playing him because of Premier League experience in Rashford, because Rashford ले लेगा Alonso की तो. When on form, But, if it goes that but side. you. I remember even last year, like when Alonso's move was happening, you were critical of it. But then I think Barca fans are happy with him. बारसा फैंस आर एक्चुअली दे वर हैप्पियर, लेकिन अभी Huh. वापस से जो अल्बा ने दिखाया ना फॉर्म, आई थिंक दे आर लाइक इट्स Okay. अननेसेसरी, और द फैक्ट दैट दे माइट गेट एंडी का, तो दे आर लाइक व्हाई डू वी नीड अलोंसो, वो वाला आ रहा है Hmm. बारसा फैन से. बट हाँ, और पता नहीं फतेह, आप यहाँ पर देख रहे हो कॉर्नर मिला है यहाँ पर मैन यूनाइटेड को. फतेह, स्क्रीन. Yeah, this is a good shirt.
This is a beautiful shirt. I told you right other day जब हम lose करे थे ना world champion tag that Huh? particular the previous night I ordered this. Oh, this is beautiful. This is a beautiful shirt. FIFA Yeah, World Cup. this is Oh, awesome, yeah awesome, इस awesome. season का ही है. What are your thoughts then on last night? I think you were a bit unhappy. I am not Very unhappy. I very think very I very only frustrating. देखो no no, but the I thing only is saw. नहीं Hmm. हम क्रिएट किए थे चांसेस वी आर डेफिनेटली बेटर इन टर्म्स ऑफ गेम प्ले लेकिन as much as that happens we are even missing more chances than what we used to or on the counter we kind of conceded तो वहां पर I think I would blame Potter and company definitely क्योंकि they had only Enzo Fernandez against Adeyemi which was like crime Yeah. और रेफरी वाज अटर शिट अगेन एक्सक्यूजेस सुनेगा लेकिन फॉर मी ओवरऑल हमारे पास वो कैरेक्टर नहीं है व्हेन इट कम्स टू दैट चैंपियंस लीग नाइट वाला इस टीम में एंड दैट केमिस्ट्री बिटवीन ईच अदर टू काइंड ऑफ गेट दैट ओवर द लाइन अगेन सब्स्टिट्यूशंस आई डोंट अग्री विद एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर फ्री किक मिला है भाई ब्रूनो फर्नांडिस ने एक फ्री किक जीता है गावी इज नॉट हैप्पी विद हिम व्हाट डू यू ऑल पीपल थिंक इन द चैट तो Hang on. was it not soft Fateh what is your timestamp by the way Fateh are you there Fateh is frozen people No. No. I was just changing my Wi-Fi connection. But just okay. quickly before we come back to this game, I only managed to see 45 minutes, man. I was so tired. I slept. Like I don't know what's happened. It's so difficult to keep up at this time, and like you're doing a fantastic job that you stay up late at night till 3, and then early in the morning also you're up for the cricket and whatnot. Like beautiful, man. Yeah, that's nice, Like man. it's like it's proper. And let's Like, not it watch. takes It's like do a pre-match, do a preview, do a review, do a yeah. Yeah, post-mortem. and different sports also. But from what I saw in those 45 minutes, obviously it's two legs. But 1-0 is with no away goals. I think it's the kind of scoreline that is manageable. Like even for Spurs and even for Chelsea, I think हाँ मतलब it's it's not the tie is definitely on लेकिन yeah, and even वो एक PSG. hope वाली चीज ना कम होते जा रही है instead of increasing because of I'm not too convinced मतलब with. we can't score for anything यार we can't score simple as that May I we are interest struggling you in a and striker? we can't May I win winning interest is you? a losing it becomes a bad habit that's what we have gotten into No, but can I interest you in getting a striker? He's a tall guy. He's a big Chelsea fan. Please, I'm not going there. चलो anyway, भाई Lewandowski को लगी यार. Hmm. Malaysia, I think, kind of kicked him. I don't know. Again, people, everyone watching, it'll certainly help if you guys can like the stream. And अगर आपने already कर दिया, absolutely thank you. Be there absolutely. लेकिन साथ साथ में अगर आप share कर सकते हो, मैंने tweet किया है along with this link. So if you can retweet that, it'll be absolutely brilliant. Barca corner. Yeah, Gavi no yellow card really. Also, what's interesting about नहीं this ठीक है. like Europa League, the Europa League is that this is the only game that they're showing like Sony on TV. Are you They might sure? be showing the app. Yeah, नहीं I Sony don't. 10-1 और Sony 10-3 वो समझ नहीं आ रहा. और रोमा का मैच I was just trying to see कि वो रोमा का मैच कहाँ आ रहा है, but they're not showing it. नहीं I don't know. तो one kickoff is 11:15 other kickoff is 1:30 no No, those are the other matches. अभी 4 matches हो रहे हैं. I think one is yeah Salzburg Roma is happening 0-0 yeah. Ajax So Union Berlin is also good 0-0 yeah, वहाँ that भी is है also going to be a good game. Shakhtar has scored meanwhile Shakhtar has scored one against Rennes now meanwhile Okay. चलो मैं Yeah. scores वहाँ रख रहा हूँ side by side ठीक है Because I'm really interested in how Mourinho does because again, last year it was beautiful. This year it right might not happen. yeah Mourinho I think lot of ये भी होता है ना रोमा का जो हिस्ट्री है इन यूरोप But कहीं ना कहीं last it was year was overwhelming last time itself but last year United almost scored. Are you ahead of me? अच्छा, Yeah, you were I'm watching on watching TV, it on na? TV. Okay. Yeah. Oh, yes. Man, it was भाई Sancho in the box and Aaron Wan-Bissaka with a run. भाई देखो फतेह एक भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव एवरीवन who's there on the chat who's watching live. एक सेकंड के लिए मैंने ना अपना कैमरा बंद किया एक सेकंड के लिए वो एक सेकंड में right away half the people dropped. Can you believe it? Oh my God. People, bhai, it's okay. Fateh knows more football than me. Let me be very honest and frank about it.
ठीक No, है? no, no, man. No, no, no. I think you are the OG now. But नहीं नहीं यार, nowhere who close. was who did Van Bissaka beat? Was it Alba? Yeah, Alba. And we were just Okay, saying Luke that Shaw he's taking the corner. Ooh. Luke Shaw centre back, Fateh. Did you even imagine Eric Ten Hag will get him playing centre back and playing well? Huh? and playing well apparently. Yeah, Hmm. like I've heard that he's doing okay. Like it's he's doing एक्चुअली okay. वो क्या हुआ था ना, वो पता था कि लिसांड्रो मार्टिनेज सस्पेंडेड होने वाला है, तो ही Huh, प्लेड वेरी स्मार्टली. ही huh. काइंड ऑफ व्हेन नीड बी, ही डेफिनेटली रेस्टेड लिसांड्रो. वो भी यार, ही वाज टायर्ड आफ्टर द वर्ल्ड कप. लुक Oh, एट दैट. हु वाज दैट? लुक शॉ. Man, you missed a one-on-one. Oh Wait, who's man, wasn't it offside though? have they not called Because it? They've not called it. They haven't called it. No. अच्छा, उससे पहले बार्सिलोना का भी यार हो रहा था काउंटर. काउंटर पे काउंटर हो रहा है यार. बार्सिलोना This का is a काउंटर very होता है good. और लुक शॉ ने ना सेव किया वो वाला. So far, it's been a beautiful game. Like yesterday, the first 45 minutes that I saw, I really enjoyed the Dortmund Chelsea game. It was end to It end. was good. It नहीं नहीं, was it was. I'm telling you, like we did very well in parts. yeah, Dortmund, of course, भाई उनका जो राइट बैक है एंड चैन सेंटर में डिफेंसिव मिडफील्डर बहुत अच्छे किए yeah. यार. चैन एंड वुल्फ, these two stood out for me. Apart from of course Adeyemi and shorter back, ये चारों लोग really. अच्छा, बेलिंगहम का we lost, okay, लेकिन to be honest, headline should have been different. Bellingham first of all should have been sent off. Hmm. Secondly, he should have got a second yellow. Secondly, I think he was in Enzo Fernandez's pocket. सच में बोलूं तो, but कोई नहीं. Hmm. That was a push. That was a push by Luke Shaw, I think. But Yeah. first ball by Bruno Fernandes to Weghorst, man, yeah, that wasn't offside. बिल्कुल. This game is giving me proper 3-3 vibes from 98 हम्म. 99. And the या kits are परसों हम बात ही कर रहे थे उस मैच के बारे में. yeah. यार वही है. Anyway, Barca has been in a 3-3 this season as well, in Europe. And you know which one? Which one? Of Which course, one? people. 3 all. 3? Oh. Inter Milan Barca. कैसे बोल Yeah. सकते हो? This year. Yeah. Okay. Yes. How can I forget? Oh, I भाई think Barca really ओहो, what a free kick, man. What a free kick. Casemiro almost got it. almost got it. Yeah, that's what I'm saying. यार मामा देखिए यार, बहुत सारे न्यूज आएंगे अभी. अभी द थिंग इज, if he doesn't sign a new contract, definitely is leaving. I don't see him staying and completing his contract next year. वो तो Where पक्की would he बात है. go? Where would he go if he doesn't There stay? are a lot of links coming here that fellow English Premier League sides are trying to, मतलब keeping a tab on it, क्योंकि यार he's still talking to Chelsea and talks are not going well in terms of extension of contract. रैशफोर्ड का भी apparently same है, but रैशफोर्ड तो definitely नहीं निकल रहा है, वो तो पक्की बात है. Where would Rashford go? Like, is नहीं anybody वो like तो हाँ, तो people might be interested, but वो ये like I'm interested to meet Sachin Tendulkar every day of my life. It doesn't happen, right? वो वाला चीज होता है. I don't think it'll happen. I've already told that more than defense, the goalkeeper is in God mode. Actually, yeah. actually? Jabbar bhai, I hear you. Ter Stegen, Fateh, who's like the best goalkeeper in Europe right now for you In on Europe form this right season? now? See, I think I'm sort of partial because of the World Cup. I was very impressed with the Croatian goalkeeper Livakovic. Emi Martinez. Why are we not talking Hmm. about him? नहीं, But let's not include the World Cup league, performances. yeah, but the league. वर्ल्ड कप में तो ओचोवा भी यार ओजी यार. Just saying. Do we count the Thibaut Courtois and Ter Stegen from Spain? Yeah, but Thibaut Courtois this season not as much. Not as लेकिन Ter much. Stegen I would say is right up there. Ter Stegen is Ter right up there. Stegen. क्या था पता नहीं. चैट आप लोग बोलिए. Whoever is not a Manchester United Barca fan, I would like to hear from you as well. And everyone जो Who है else? वो भी How बोलिए has भाई. how Who is has the Arsenal goalkeeper been? Because I've heard very good things Ramsdale about. is good, but ऐसे नहीं बोलूंगा that he is like wow Hmm. वाला factor है. Wow, मतलब wow. जैसे David De Gea for a few good few seasons he saved Manchester United and Yeah. literally got them points. जैसे Yeah, Petr yeah, Cech used to do for Chelsea. वैसे नहीं yeah, किया yeah. है. I don't think Ramsdale is in that league. Ter Stegen is in that league this season. जो Thibaut Courtois last season था for Real Madrid. So Ter Stegen I would say, but I would say like people don't be surprised. Like Jan Sommer might. I think he'll be a good fit See, by the next Donnarumma is season. definitely not there. He's Yeah. howler after अच्छा free howler. kick, yeah.
so much space for Man U in the box. Ankit, the way it's gone, okay, I know that Barcelona have had chances, but if Manchester United leave this place without a win, the way it's going right now, they'd be very disappointed with themselves. It's a bit like how Inter Milan fared, like okay, the 3-3 helped us, but technically we should have won that game. Yeah, you मतलब arguably I think कौन सा एक वाला गोल था जहाँ जेको was a through on goal and Gavi Oh, there was apparently made that challenge. I Aslani, remember that that. that one-on-one with Ter Stegen. Yeah, then I think we have to say that Ter Stegen is the best Honor a goalkeeper. brilliant. Oh my God, भाई साहब मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई स्कोर करने वाली है. It's about time. I think They you should. can say other way around that it might backfire. Man United missing all these chances. I think this was a, I think direct header था यार. It was a direct header. I think should have done better. अगर Should have been. कैसेमीरो छोड़ता पीछे वरान था right away. Calling नहीं हुई maybe I'm guessing. But I think that was a good corner absolutely. पता नहीं सब लोग देख रहे हो भाई. Again I know that you guys might be focusing on the match इसलिए comment नहीं आ रहे आज. लेकिन कोई नहीं. Fateh, you had your dinner, bro? I had my dinner. You are eating your dinner. Hats off to your commitment, Ankit, man. Like I love this. Like this is the spirit. Just a snack, yeah, actually. But I don't know. again, like Having some broccoli. okay, so fitness conscious. No, man. I just No. like it simple as that. You like broccoli? Oh my god! Oh, Yeah. goal! Oh, what a save! Wow! एक मिनट कुंडे में मिस्टेक दो पहले ना. Alonso! Oh man, Ter Stegen is the best in the world right now. Get it real. Ter Stegen is the best goalkeeper in the world right now. Best in the world right now. And Agreed. Manchester United, how have you not scored? ये reaction मेरा था अभी तक. कल इसी time पर भाई I was telling this about Chelsea. How have we not scored? Manchester United fans will be pulling their hair out. And Kunde, Alonso, sorry to say, Alonso was Rashford. It's not even a contest. Not even a contest as much as I like him. उत्कर्ष पूछ रहे हर्ष बेनीवाल नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है भाई हर्ष बेनीवाल मैंने फॉलो नहीं किया. Who is Harsh Beniwal anyway? Like I saw 1 or 2 videos after when like it was. Yeah, after comment chat नहीं बोला था even I got to know. Even I'm not a follower. follower. Yeah, like I had no clue who. But yeah, कोई नहीं आशीष देखे attempts हुए गोल नहीं हुआ सेव हुए गोल नहीं हुआ. That is important for Barcelona to keep it 0-0. And I feel there might be a need for a change. And again, people, I will be showing क्या होने वाला है in terms of tactics. Again, do not forget to hit that like button जो भी आ रहे हैं. But भाई Champions League में while we are watching the match, Fateh, so in the 4 matches that have happened, Benfica got the best result on paper. Best result, yeah. Right, 2-0 against Club Brugge, and Scott Parker is not doing well apparently वहाँ पर. लेकिन now that this has happened, like मतलब आपने देख लिया first leg, do you think like overall you have to say Bayern Munich out of these 4 teams, like would you say the favorite if you have to pick one? I again see like what a ball, yaar. What a ball. Yeah, we again talked about it. Like I think Mbappe still has something up his sleeve. Mbappe, because after that World Cup, I don't think I'm going to just write any team with Mbappe off. Like I'm not. So yeah, I think good result for Bayern. But then again, एक second, Araujo injured क्या? Don't tell me he's injured. Araujo has been absolutely fantastic at the back. No, I don't think he's. I think he'll be okay. He's okay. He's okay. And, okay, मतलब yeah, shoulder पे गिरा ना? नहीं ठीक है वो ठीक है. How big of an absence is Pavard? I think that's what we have to look at. Like Pavard is a big absence. Yeah, लेकिन I think if you remember, even during the match, I know Pavard finally got a red card because second yellow, but he was at left centre back when it ended. As soon as Mbappe came, they changed the structure. वो क्या कि Upamecano went right centre back, De Ligt playing centre back, and Pavard playing left centre back. तो ऐसे भी वो Mbappe के अगेंस्ट खेलता नहीं क्योंकि वो बच जाती है उसकी, जैसे अलोंसो की बज रही है अभी और रैशफोर्ड के साथ. ठीक है वही होता. तो लेकिन ऑन द अदर हैंड पवार डिजर्व्ड दैट सेकंड लेग बिकॉज आई थिंक आज मैंने बनाया था या मैं दिखाता हूँ एंड एवरीवन इन द चैट डू हेल्प मी आउट. यहाँ पर आप लोग भी बोलिएगा फतेह दिस आई जस्ट डिड अ स्ट्रीम. तो आज क्या हो ना 2.5 घंटे पहले एक स्ट्रीम किया था मैं. I was supposed to be discussing Chelsea and cricket because of tomorrow's test match against Australia. So generally when I do football and cricket, I do an Almighty Sports Plus. और मैं क्या गलती से क्या स्ट्रीम यार्ड ग्लिच था, दोनों चैनल में लाइव हो गया साथ में. ठीक है. और यहाँ पर ओह
Arey man, dangerous player with Manchester United, dangerous player. That is Van Bissaka is not. He's been the worst player for Manchester United, Aj. And that is again a second save by David Dia. But is it a tackle on Jordi Alba? Late tackle. Would you say that? I don't think Let's see so. the replay. Let's see the. David Dia Jordi Alba को push कर रहा है. भाई साहब fellow Spaniard है. But हाँ. तो what I'm saying Fateh is like दूसरा वाला stream दूसरा channel में भी live हो गया. ठीक है. It was supposed to be an Almighty Sports Plus, which is again linked in the description below, people. तो I was like, चलो ठीक है, I'll just continue. You won't believe there are people, and I know I love every subscriber. Absolutely, it's an almighty fam, all the panelists and subscribers. So there were about 6-7 people, just because you get 2 notifications, right? मैं बार-बार स्ट्रीम में बोल भी रहा था हर 5 मिनट में कि ये गलती से हुआ है. It's okay, we're going to talk football as well as cricket, just not cricket. So just stick around. लेकिन 7 people actually unsubscribed. Why? And the moment that happened, क्यों? क्योंकि डबल नोटिफिकेशन आती है ना साथ में, तो दे आर लाइक भाई इरिटेट कर रहा है बंदा. कैन यू बिलीव इट? बट इट्स गुड इन अ वे, राइट? दो 7 people are like, okay, मैं मुझे मतलब जस्ट फॉर सब्सक्राइबिंग सेक नहीं चाहिए, मुझे चाहिए people who actually discuss with me and I can discuss with them. But that's not on, like that's not fair. Yeah, but anyway, that's part and parcel of YouTube. भाई Rafinha with a crazily volley shot जो गया नहीं कहीं भी, लेकिन at the end of the day he wins a corner. So it's good. Rashford beats Alonso in pace and got a shot, but yeah, बिल्कुल. क्या लगता है अगर चेल्सी यूरोपा में होती तो इन सभी टीम्स के साथ कहां तक जा पाती? भाई उत्कर्ष, यार छोटी मुंह बड़ी बात. पीपल माइट गेट ऑफेंडेड. चेल्सी हैज बीन द यूरोपा लीग जस्ट 2 times, और दोनों बार क्या हुआ है सब लोग जानते हैं, हम लोग जीते हैं. तो भाई when we मतलब that's a, with all due respect, I think we have taken Europe seriously from the time we have come back to Europe. I think right from the talk about 1999, 2000. Remember Barca, Chelsea? Yeah, what a game. Right? 3-1 and 5-1. That was my first live Champions League game. No, second actually. 99 final was the first, obviously. Bayern Munich, Man United, live, proper live. Yeah. जो मैंने देखा था मतलब तो 1999 2000 season I'm like okay, and before that I used to follow more of क्या बोलते हैं international football, right? World Cup 98. Till about 98, yeah. Yeah. And Ankit, those auto glass Chelsea kits, my God, they were beautiful. Do you have them? Legendary. You need to get those auto glass kits. Yellow, even the white kit was beautiful. And that Barcelona team was also very special. Rivaldo, Figo. मतलब he was a Ballon d'Or winner, if I'm not wrong. Huh? 99 Ballon d'Or. नहीं, Ballon d'Or winner कौन था? Rivaldo? हाँ, Rivaldo ही था ना? Yeah, I think so. Correct. I think so, yeah. Yeah. अरे भाई Rafinha, भाई Rafinha doing well actually in that second against Malaysia. In fact, Malaysia has won the free kick though. लेकिन anyway. Gavi Pedri combo always working for Barca. De Jong also sturdy. भाई मैं बोलना चाहूंगा अनमोलदीप, as much as आप बोल रहे हो ये, और by the way Pedri is down for whatever reason, I don't know why, but in my personal opinion, I don't know about you Fateh, मुझे लगता है that Barca may need to make a change at halftime. I think they had their chances, I think, early on in those opening 20 minutes, but the last 15-20 minutes I think has just been Man U. And they need. I think they're already making a change. Okay, there is actually unfortunately an injury. Sergio Roberto लग रहा है आ रहा है. भाई Sergio Roberto हम जानते हैं क्या हुआ था इंटर बार्सा मैच में. People don't know. हाँ मतलब मजाक की बात थी उत्कर्ष, आई नो व्हाट यू मीनिंग. हाँ लेकिन अभी यार चेल्सी तो हम बीट नहीं कर सकते. मैं तो साउथहैम्पटन के साथ कॉन्फिडेंट नहीं हूँ भाई वीकेंड में, विदाउट मैनेजर बाय द वे. तो इमेजिन, मैं मजाक की बात कर रहा था मैं यहाँ पर, लेकिन हाँ सच्चाई में ये है कि यार इस बार तो यूरोपा लीग काफी अच्छी है यार क्वालिटी में. अब देखो इसलिए मैंने पोल में डाला है सब टॉप. Irrespective of a club's record, you can never predict in the Europa League and the Conference League, because you don't know when a team decides to take it as like as their main focus. Especially a World Cup year mein. Yeah, and there's chopping and changing of the squad, and there are other games to play. So there's always that sort of trouble that happens with the Europa League. Pedri gone, yeah. Big setback. And remember people, second leg next week he hai. It is round of 32, or you can say a playoff, right? So unlike a Champions League, you don't have a break. Yeah. And that is the thing. और यूरोपा लीग भाई, talk about उत्कर्ष जो पूछ रहे थे, I am pretty confident next season चेल्सी का या तो यूरोपा लीग होगा या तो नो यूरोप होगा.
Hmm. No, I think आया गया Chelsea will be. अभी No, के लिए. what do you mean Europa League? As in Chelsea will make the top six. At best, I don't see us finishing in top 4, and I don't see us Yeah, winning the Champions League either. If I'm yeah. I being think really top honest six. about it. Yeah, top 6 or 7 or yeah, But anyway, yeah. I think hope always keeps us alive. जैसे मैं बोलता हूँ. That is what it is. but Ankit, would it not be better for Chelsea to miss Europe completely, like that Conte season, and just concentrate on the league next year? Would you not like पता a नहीं यार. title I'm path? as a fan, I wouldn't want that. भाई Hmm. just waiting for only weekend matches नहीं यार. Hmm. I know I'm Yeah. being very Huh. selfish वहाँ पर, लेकिन नहीं. I think on the other hand, even seriously speaking ना, I think it won't. Hmm. देखिए Conte got it out because it was, first of all, it was Conte. And Hmm. Conte, by the way, yes, very sad to know that he's still not really well. He's given an interview saying that Yeah. क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज्यादा पुश करता था, that is why it has taken to Yeah. his body. लेकिन at the same time याद रखिए, that time we had finished 10th previous season, Varane giving a free kick away. Yeah. तो 10th. Yeah. motivation was much more of the players to do much more well, क्योंकि नहीं तो proper होता यार, मतलब they would have been out, Hmm. all the players. Yeah. तो eventually they had to do that. अच्छा, इस बार देखते हैं how we finish. But the biggest aspect बोलूं, the Hmm. squad. Hmm. Squad is too big to be managed by Potter, I feel. अगर Potter रहता है But तो. you'll probably move certain pieces. Like you'll probably. I think It's there'll be still more big. Like we changes. have like 31 players. अरे भाई, Yeah. great counter by Manchester United अभी. I don't think is offside. Rashford taking on Kunde. भाई कुंडे अराहो दोनों Rashford भाई, they are doubling on to Rashford. एक प्रथम में आ रहा हूँ आपके कमेंट में ही. वैन बिसाका भाई, वैन बिसाका, कैन यू कैन वी इवन आर्ग्यू? वैन बिसाका खेल रहा है जैसे कि अपने बालकनी में खेल रहा है फुटबॉल. ठीक है, द गाय इज बीन रियली कैजुअल ब्रो. Yeah. I मैनचेस्टर think यूनाइटेड इतना इंटेंसिटी के साथ खेल रही है. वैन बिसाका, आई एम डिसअपॉइंटेड इफ आई एम अ मैन यूनाइटेड फैन. प्रथम आप हो, आप बोलिए, हाउ आर यू रेटिंग वैन बिसाका? आई थिंक हो सकता है देयर माइट बी अ चेंज नीडेड देयर एज वेल. अगेन देखो, वैन बिसाका, चलो yeah. He's given the ball away there. I think. ओके. प्रथम बोल रहे हैं यहाँ पे, आई लव मलाशिया. Oh man, end-to-end football man. This is, I cannot take my eyes away मैच Yeah. से. देखिए वो It's वाला been a फुटबॉल beautiful हो रहा है. game It is almost like the Inter Barca match but without the goals. without the goals, I love and this is Malaysia, but why he's trying I things said, only Ankit, that like like I want to be like on your stream for this game because I knew that this was going to be a good game. Like, या नहीं. लेकिन देखिए विद मलाशिया आप जो बोल रहे हो ना प्रथम, आई हियर यू. what's his लेकिन age? How old is he? वेरी यंग. बट एनीवे, so the point being यहाँ पर प्रथम के क्वेश्चन पे जस्ट एड्रेसिंग दैट पॉइंट प्रथम इज आस्किंग हियर ऑन द स्क्रीन. आई थिंक दैट Malaysia is an outlet. ठीक है, yes, I know that he needs to get rid of things, but याद रखिए यहाँ पर मिडफील्ड बैटल चल रही है ऑलरेडी. ठीक है, सो फॉर मी आई थिंक अगेन it's important to kind of get to position, or again Eric Ten Hag doesn't want to hit on counter. तो इसलिए शायद इज कीपिंग होल्ड ऑफ द बॉल लिटिल बिट टू मच. लेकिन आई थिंक इट बी फाइन यार. अगेन रिमेंबर, हम काफी बार बहुत हार्श हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे डोंट डू वेल. लेकिन मलाशिया इज नॉट अ प्लेयर आज के दिन में जो वीक इन वीक आउट खेल रहा है. तो मैं बोलूंगा इट्स ओके. आई थिंक रादर देन दैट वैन बिसाका, आई एम वेरी सरप्राइज आपने उसके अगेंस्ट नहीं बोला. कुछ जस्ट सेइंग सस्पिशियस विद बिसाका. बोथ फुल बैक बिन पुअर. बोथ हैव बिन पुअर, बट वैन बिसाका हैज बीन टेरिबल ब्रो. आपको जनरली मैं बोलूंगा दैट अपार्ट फ्रॉम दोस फुल बैक्स, आई थिंक यू आर गुड. आपने अच्छा खेला है. लूक शॉ हैड अ कपल ऑफ वेरी गुड टैकल्स. कैसेमिरो, हाँ पहले दो टैकल्स ही मिस्ड राइट, बट लेटर ऑन आई थिंक ऐसा नहीं है कि बारसा ने डोमिनेट की मिडफील्ड. बट आई डोंट नो मैन. फतेह, हाउ आर यू समिंग अप? आई नो इट्स वी आर गेटिंग टू दैट हाफ पॉइंट मार्क. No, I think Man U've been the better team. I saw those one or two early Barca chances as well, but since then I think it's been Manchester United, and they'll be kicking themselves for not at least having one goal. Yeah. Anyway, again, people, whoever is coming out to the stream, please like the stream, means a lot, and of course, it will help the algorithm. ज़्यादा likes हो तो भाई, I'm telling you, goals are coming. Just hear me out, and it's a fact. Hmm. Is Xavi playing a full strength team though? This is how they line up every Serie La Liga game. नहीं. So basically, they are missing Busquets, of course, right? Busquets is injured, Yeah. and you can argue Dembele is also injured है, लेकिन Dembele would Okay. have been preferred over Rafinha generally. Yeah. Yeah. Going by Xavi, although मैं बोलता हूँ that Rafinha has actually improved in the last month. ठीक है. Hmm.
Not as much, but definitely has improved. Uske alawa, Alonso would have not played center half. Christensen has had a fantastic season. Christensen has been arguably, people are saying like he could be the player of the season for Barcelona. Because जो defensive record है, it's so brilliant. The Barcelona का. Pedri, Christensen have really, been, even De Jong, brilliant. Man U have, like, there's a lot of space to attack. I mean, this is. अब देखो सर्जी रोबर्टो आया ना, Hmm. I don't know, मतलब defensively I think it might actually not be a bad thing for Barca. Like in attacking wise, it's a huge, you can't even compare. Like Pedri, come on, Yeah. half time हो गया भाई. Everyone in the chat, again I request everyone to hit that like button और मेरा community post भी like कर दीजिए. Hopefully there will be a lot of people coming on now so that we can react to the first half. यहाँ पर हम review करेंगे. But also I request everyone, अभी भाई 12:05 हुआ Indian Standard Time में. Fateh and everyone in the chat, do let me know a couple of minutes before the kickoff starts again. Especially Okay, Fateh जो yes, स्क्रीन yes, पर देख yes, रहे हैं. yes. क्योंकि मैं ऐप थोड़ा बंद किया हूँ मेरा फोन को थोड़ा रेस्ट देने के लिए, ठीक है. Yes, yes. एंड अगेन अभी let us talk about it. तो भाई इन डिटेल देख लेते हैं. मैं वही दिखा रहा था ऑलरेडी, बट एज थिंग्स स्टैंड, यस इट इज 0-0. मैं बोलूंगा इन टर्म्स ऑफ गोल्स नॉट कमिंग थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस बोलेंगे यार हाउ हैव वी नॉट स्कोर्ड. अगेन you can argue that David De Gea has had दो chances to kind of defend. David De Gea has made saves. लेकिन जो भी लोग देख रहे हैं, आप लोग बोलिए, what do you all think? What has been missing for Barcelona? एक Pedri going off injured, huge blow. Let's see कितना बुरा इंजरी है. लेकिन if he's gone injured, next week जो है second leg, he will be not playing. और again they have to see what happens इस leg के बाद में. But not just that, remember La Liga में they are 11 points ahead with a game extra played. Also Jordi Alba on a yellow card. Yes, I know यहाँ पर calls थे for Gavi also to get a yellow card. In my opinion वो yellow card नहीं था. That's my honest opinion. Manchester United का pretty sure apart from the fullbacks, I think yes Varane को मिला है yellow card, but generally speaking I think they have been quite good. ऐसा नहीं बोलूंगा that they've been bad, लेकिन वेगॉर्स का चांस, कम ऑन यार फतेह, pretty sure हम दोनों भी होते तो भाई we would have got a better attempt. नहीं? Yeah, I mean, and how has, like, I don't think the Weghorst move has sort of worked out as of yet. नहीं, he's got a goal and an assist अभी तक, लेकिन last game में actually अच्छा किया था. The way Ten Hag played is he got Weghorst to drop. He was only you had running into the space. Okay. Ter Stegen made a brilliant save. It was Alonso who got beaten first, Kunde, and then Alonso got beaten. और फिर basically, अच्छा मेरा एक सेकंड, मेरा internet. Okay, am I there? I think I'm here. Fateh, I'm here, right? You're able to hear me? Yeah, you're here. Yeah. मेरा इंटरनेट हैज बीन अप एंड डाउन पीपल, पता नहीं ये रोज इसी समय होता है. कल भी सेम चीज हुआ था, बट एनीवे. बट अनमोलदीप बोल रहे हैं वेरी इक्वल गेम बट टर स्टेगन वाज टेस्टेड मोर, बोथ टीम्स डिड ओके. मतलब वुड यू से टर स्टेगन वाज टेस्टेड मोर, लाइक बोथ मेड 2 सेव्स इफ आई रिमेंबर राइट, जहां तक मुझे याद है. डेविड डे गिया को डायरेक्ट सेव्स थे बट टर स्टेगन एक्चुअली मेड अ प्रॉपर सेव. यू कैन आर्ग्यू दैट, नहीं फतेह? I think so. No, I mean, see the saves all right, but I think Manchester United have just been, like they've had more space to attack. They've found better, passing moments inside their box itself. So I would not say it's been that equal. I think United shaded, probably the better team, but then yeah, Ter Stegen is, like you said, the best goalkeeper in the world right now. So Barca don't have to worry. उत्कर्ष भाई, ये मेरे रेटिंग्स नहीं है बाय द वे, फॉर पीपल बिफोर दे जज मी. जो मैं दिखाता हूँ ना स्क्रीन पे रेटिंग्स, राइट अवे मैं मैच भी देख लूं, मैं आपको रिएक्ट भी करूं और रेटिंग्स भी करके तैयार रखो, वो पॉसिबल नहीं है. तो मैं आई टेक यूज ऑफ बेसिकली अ वेबसाइट एंड दैट इज व्हाट दे रेटेड. अलोंसो 7 रेटेड. आई डोंट अग्री 100%, लेकिन याद रखिए यहाँ पर अलोंसो को एक चांस मिला था. देयर वाज अ फ्री किक इन अ प्राइम अलोंसो पोजीशन व्हिच वेंट ओवर गावी ऑन दैट फ्री किक. Yeah, but that went way over, right? I'm just saying that Alonso is there for a reason. Alonso is there, I think, that Weghorst against to defend set pieces and to attack, and he's a good set piece taker. I think that might be the reason. Apart from, I'm guessing, थोड़ा सा rotation plus the fact that जैसा आपने देखा, Pedri is unfortunately injured with Sergio Roberto coming on. That's not good. लेकिन on the other hand, मतलब how would you
how do you rate? I don't know. मतलब Barca का in a strange way, Jules Koundé, I know he made one good attempt, but the moment जहाँ से chance आया था, Alonso जहाँ पर he lost Rashford, Hmm. Jules Koundé, I think lost the ball first, and because of which Rashford went on that run. So in a strange way, I think Barca, I think they have to thank Ter Stegen more than Manchester United having to thank David De Gea. लेकिन अगेन रिमेंबर, दोनों के एक एक डिफेंडर येलो कार्ड पर है. यहाँ पर यू हैव जोडी अल्बा, वहां पर यू हैव राफेल वरान. एनी रेड कार्ड्स कमिंग, फतेह? इज इट दैट काइंड ऑफ अ मैच येट? I don't think it's that kind of a match. With I don't, Casemiro, unless Varane, the Real Madrid factor? Casemiro, Varane. Yeah. But I Varane don't is on a think yellow card. I think he's got enough experience to not take a second yellow. Earlier United were losing the second ball, but now the situation is reversed. In fact, मैं तो बहुत ही सरप्राइज था. जो शुरुआत हुई थी ना मैच में, वहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड वर एक्चुअली हैविंग अ लिटिल बिट मोर ऑफ द बॉल जब शुरुआत हुई थी, फर्स्ट 10 to 12 to 13 मिनट्स, ठीक है, और बार्सिलोना काउंटर कर रही थी. लेकिन वहीं पर आई थिंक रफीनिया ने बेटर किया कंपेयर टू मलाशिया, एंड दैट इज व्हाई मैंने बोला है रफीनिया ने बेटर किया है. उस साइड ऑफ कोर्स गावी हैज डन डिसेंटली अगेंस्ट ऑब्वियसली यहाँ पर वैन बिसाका. सो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे you will have to say that it's about, say Barca's width. अगर वो अच्छा करे तो I still think Barca have that in them, Lewandowski being there versus a Weghorst Yeah. on the other side. ठीक है, Yeah. I trust. Yeah, I mean, like we you talked about last night's game. The first half, okay, perhaps the English team was better. The second half, somebody like Lewandowski just pops up. I think he just needs that one chance, and who knows? I mean, Alba, he was asking for a penalty, so maybe that's how we're gonna get a goal. But yeah, I do hope that there are goals in this game, because I do think that it'll only open up. Like, especially if United get a goal, Barca will go for it. So yeah, it'll really open up. या अच्छा, तो ये बाकी लोग जो भी इंटरेस्टेड है भाई, दीज आर द रेस्ट ऑफ द फिक्सचर्स जो चल रहे हैं अभी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड दैट्स इंटरेस्टिंग टू नो दैट भाई. अगेन यहाँ पर अच्छा बासिल, ये सभी चल रहा है क्या? चलो ना, नॉट टू बैड. फ्योरेंटीना हैज अ गोल अप भाई. इटालियन फुटबॉल फैन फतेह, ब्रागा actually is a good team. Braga is one of the few teams, I think very few teams in fact, which has beaten Benfica इस season में. So that's a very This good season, yeah. half-time result for Fiorentina. And But Roma, Fiorentina have been bad. Ankit, Fiorentina, the kind of squad that they have, Vincenzo Italiano has been a big disappointment this year. I think they're 13th or something. And, they've definitely got a squad to be fighting for the Europa League. So, very disappointing. फेयर इनफ. और मैं कमेंट्स ले रहा हूँ भाई, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं. लेवा चांस मिस्ड अप फ्रंट व्हेन अ मिस पास वाज देयर फॉर बाय अ मैन यूनाइटेड प्लेयर. या बिल्कुल, और दैट वाज बेसिकली वैन बिसाका, जो इसलिए हम निंदा कर रहे थे ना. बोथ द फुल बैक्स ऑफ मैन यूनाइटेड, स्पेशली वैन बिसाका. वैन बिसाका को लग रहा है भाई फतेह, लिटरली ही इज लाइक, यहाँ पर इंडिया में हो रहा है 12:15 हम अभी बज रहे, looks like it is 12:15 there and he's sleepy, man. I don't know, something wrong with Van Bissaka. And I think, the one time that he really got past Alba, I mean, he's had one or two opportunities, and I think Alba's there to be, because he's there for the taking at times. So who can they bring on in place of Van Especially Bissaka? अभी yellow card पर है, तो I think that's a good exactly point. तो can, okay, let me put up the lineup again. भाई सब लोग in the chat, do let me know क्या changes चाहिए. एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा, yes, बारसा थोड़ा सा they've gotten better as the half went on. ये भी definitely is on, despite Pedri going off and of course Sergio Roberto coming on. लेकिन साथ साथ में I still believe that they might have to crowd the midfield a little bit more. थोड़ा सा और, when Barca dominate the midfield is when they kind of do well. I know wings में they have gotten the better of Manchester United क्योंकि Van Bissaka, Malaysia have not been good. लेकिन what about the central space? For me, if they are able to get one more midfielder, तो अगर Gavi plays more centrally, right? लेकिन वहां पर वही हो जाएगा, like you said Fateh, Alba will get exposed, right? So that is the reason why Gavi is playing, right? So, but would you be saying कि नहीं, if you want to score and create more, which Barca needs, because Pedri अब नहीं है midfield में, so they need more creativity in between. So won't you think that Gavi का जो doggedness plus creativity will be useful now along the Frankie? Now that Sergio Roberto has come on, Sergio Roberto can kind of be a right midfielder almost, or Gavi can tuck back, so they can kind of go over a proper 4-4-2. Why not? So we are taking Kessie off? नहीं, don't take anyone off, just change the tactics. So basically, हाँ, तो get Gavi to kind of, वो करा है. Inter Milan Barca game में किया था Gavi, तो basically he tucks in, he kind of becomes your left winger, or and then you have basically क्या बोलते हैं,
Sergio Roberto playing on the right hand side, which is capable of. अच्छा, on the other Right hand, there's hand one side. more idea. Yeah, yeah. The reason मैं क्यों बोल रहा हूँ, because there has to be a compactness. So चार जो बोल रहा हूँ midfield में, it is a compact, a narrow Hmm. four, almost a diamond four. Hmm. ठीक है, यहाँ पर Hmm. you can have even one example is Rafinha on the left side of the diamond, जो मलूडा खेलता था चेल्सी में, याद है? Rafinha has done that for Okay. Barca Oh. in the beginning Uh, part of this season. तो okay. Rafinha can do that. And रीजन मैं ये बोल रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आई स्टिल फील दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड नॉट बीइंग अहेड इन दिस गेम मेरे ख्याल से इज अ लिटिल बिट ऑफ अ मिस फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, और इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सेविंग ग्रेस फॉर बार्सिलोना. ठीक है, Yeah. इतना नहीं बोलूंगा बहुत डोमिनेट किया, लेकिन इट्स इंक्लाइन टुवर्ड्स मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी. तो दे नीड टू चेंज समथिंग बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई बिलीव दैट दे नीड समथिंग टू स्टॉप द पासेस ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड जो काउंटर में हो रहे हैं ना. ब्रूनो ने जो किया था बॉल टू वेगोर्स्ट, Yeah, yeah. भाई मैच शुरू हो गया क्या? नहीं 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 अभी तो I think they हो still जाना have चाहिए था अभी तक, नहीं? 5 minutes left, I think. अच्छा, क्या हो गया यार, मैंने अपने लाइफ के 2 साल उससे दी. अरे भाई सॉरी यार, कोई नहीं यार. बायर्न म्यूनिख, चिल चिल ब्रो, लाइफ इज ऑल अबाउट दैट, लाइफ इज ऑल अबाउट लेसन्स. डीएम मी ब्रो, लेट्स टॉक, कोई नहीं. 2 साल तो कुछ भी नहीं है. मी एंड फतेह कुछ भी नो नहीं है. अबाउट लाइफ. एग्जैक्टली, आई थिंक रैशफोर्ड वुड बी, मतलब सॉरी इफ आई एम वी आर लाफिंग, आई डोंट मीन दैट टू काइंड ऑफ हर्ट योर Yeah, फीलिंग्स. इट इज व्हाट yeah, इट yeah. इज. टेक लाइफ, ट्राई टू टेक इट. आई नो इज easy for us to say. I think Rashford would be more impactful in central position. uh, well, Alonso being there, Rashford in central position, तो क्या बोल रहे हो, मतलब what change would that mean आप Garnacho को लाओ? But do Manchester United really need to do that? Sancho has not been good, but he's not been terrible either, right? I think there was that one moment where Sancho nearly scored, and I think it came off De Jong. So that was yeah. I think let's. I don't think Man U need to change at halftime. Maybe after 60 or 70 minutes in reaction to what Xavi does. But other than that, I mean, look, I think Man U will still be happy with a 0-0 if they take a 0-0 to Old Trafford. But yeah, I mean, if they have more chances like the way they had today in the first half, then I think in a way, I think you are kicking yourself for missing those chances, especially नहीं that नहीं, great half. I think that right now, as much as Eric Ten Hag will be proud of his boys, कहीं ना कहीं deep Yeah, down he will like Manchester United yeah. fans. What do you think? It'll be interesting आपको सुनकर, क्योंकि I feel that it was a great chance for them to kind of get a lead. Like for me, Rashford beating Kunde and Alonso, that was a nailed on goal. That Going was by good. Yeah, Rashford जो yeah, किया है in the last few weeks, ठीक है, yeah, yeah. if not for Ter Stegen, say that is one moment I'm talking about. अच्छा, उसके अलावा वेगोस्ट वाला तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जहां पर ब्रूनो ने बहुत ही बढ़िया थ्रू बॉल दिया था एंड वेगोस्ट वाज थ्रू ऑन गोल. दैट वाज द मोमेंट. अच्छा, ऑन द अदर हैंड, लेवेंडोव्स्की कैन आर्ग्यू व्हेन वैन बिसाका लॉस्ट द बॉल. Lewandowski should have Hmm. kind of beaten David De Gea there. देखो तो ideally speaking, if I'm being real, it should have been Barca 1 Manchester United 2. लेकिन chances पर कुछ नहीं होता. कल मैंने पोस्ट किया था, फतेह ने देखा होगा पोस्ट भाई. Hmm. Your sparky moments in cup competitions means for Of nothing. competition. Yeah, 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 yeah. Exactly. That's life, bro. Trust me. But anyway, नेमार लंदन में, हाँ भाई, अगेन बहुत सारी न्यूज आ रहे हैं. I'll be really surprised if he comes to Chelsea. The reason being that yeah, we might inquire about it. Come on, after buying Mudryk for 70 million and a young Mudryk, we won't give Hmm. up on him after 3 games for sure. Hmm. Secondly, नेमार अगर आप सोचो सेंटर फॉरवर्ड है, तो भाई उसने खेला सेंटर फॉरवर्ड ओनली फॉर ब्राजील इन द लास्ट गुड Hmm. फ्यू इयर्स. तो मैं नहीं देखता हूँ हिम प्लेइंग अ सेंटर फॉरवर्ड, स्पेशली इन प्रीमियर लीग, एज मच एज ही इज अ ग्रेट प्लेयर एज वेल. तो बहुत ही सरप्राइज होऊंगा बिकॉज वी हैव स्टर्लिंग, वी हैव मुड्रिक, वी हैव इंकुंकू who's going to come on next season, जो लेफ्ट में खेल सकते हैं एज फॉरवर्ड्स. Not much options for Barca in mid. Pedri injured suddenly. Mid is looking weak. इसलिए exactly अनमोलदीप भाई, thanks for backing me. मैं इसीलिए बोल रहा हूँ that you will have to basically change something. कहीं ना कहीं I know Alba, मतलब ये भी चीज कर सकते हैं फतेह. Why Hmm. don't Barca? I think come on, 5 substitutions there, right? Alonso, Huh. could he No, be are you kind are of? you like suggesting something like Alonso and Alba वाला में से एक निकाल लो Yes. and I was when you were talking पहले I was just wondering when you will come to this. I think so. That makes sense because for me, अभी Hmm. तक बच गया ना अलोंसो. बाय द वे बोलना पड़ेगा भाई, बंदा इवन बायर्न म्यूनिख गेम में अच्छा किया था इन माय ओपिनियन, राइट? द फर्स्ट वन आई एम टेलिंग, Hmm. राइट? Hmm. बट Hmm. अगर आप देखो ध्यान से, बेंच में ऑप्शंस क्या है भाई? दे हैव अ यंग एलेक्स बाल्डे यार. एलेक्स बाल्डे इज Hmm. ब्रिलियंट, ठीक है, Yeah. बारसा का ऑप्शन है. तो व्हाई Hmm. डोंट, कंसिडरिंग एल्बा येलो कार्ड में ऑलरेडी है,
You don't want to मतलब expose Ankit, him the totally on the players are screen. coming out. The Man U players are coming out, so you can. हाँ, मैं ऑलरेडी शुरू कर दिया हूँ मेरा, तो मेरे में तो Oh, वो ऐड आ रहा है अभी तक. yeah. बट कोई नहीं. तो बाल्टे माइट कम ऑन. अगर मैं बोल रहा हूँ इफ गावी टक्स इन टू मिडफील्ड, ठीक है, Hmm. और मेक इट अ डायमंड, और मे बी रफीनिया टक्स इन टू मिडफील्ड, मेक इट लाइक अ 4-5-1 ऑलमोस्ट, ठीक है, तो मे बी, और मे बी अ 4-4 टू डायमंड, तो मे बी एलेक्स बाल्टे इज दैट गाय, क्योंकि वो विंग पर ही कैन बी लाइक अ नूनो मेंडेस काइंड ऑफ अ प्लेयर, यू नो व्हाट आई मीन. Hmm. Hmm. And on the other hand, you make one more change if you need it, for basically someone in the forward line, and that could be what, who options क्या है. Ansu Fati, maybe not now, but maybe after 1 hour. अभी के लिए खाली make one change. Again, मैं तो चाहूंगा कि midfield थोड़ा सा बारसा be extra protected. वहां पर मुझे लगता है that ब्रूनो को बहुत स्पेस मिल रहा है अभी. Hmm. ब्रूनो एंड कासिमिरो आई थिंक नीड्स टू बी, वो जो पासिंग लेन से ना वो स्टॉप करना पड़ेगा. Ter Stegen, the best keeper in the world right now on form. Yes, Bayern Munich, we have Yeah. already discussed about that. I think yes, but interesting रहेगा like for Germany, who starts? No, Neuer is already out, right? So it has to be Ter Stegen. नहीं, लेकिन once Neuer is back, When is he coming back? Like, he's not coming back this year. Like for the next 6 months, he's not there. I think the Germans. Maybe the Neuer cycle is over. I know that they are hosting the next Euros, and Neuer wants to play and he wants to captain. And I don't know how it's going to be after injury. I think the Germans, they shouldn't be too emotional. I mean, Hansi Flick, irrespective of how things are. I mean, Hansi Flick is still in charge, right? Germany, yeah, I think Yeah. so. 1 second, he's been seen on Chelsea's matches all the time, by the way. Oh, really? That would be a very Yeah. interesting coaching. लास्ट Yeah. 4 हफ्तों में वैसे मैच शुरू हो गया है. लास्ट हाँ. 4 हफ्तों में ही इज बीन देयर इन द मैच स्टेडियम फॉर 3 of the games. People say to watch this guy Havertz and Havertz, but I don't believe that. I have a weird feeling. Anyway, it let's would be see. it would be a very interesting move if Chelsea get him as the manager. भाई सब लोग in the chat, do let me know. First of all, like कर दीजिए stream again. Fateh OP in the chat कर दीजिए, and do not forget to even subscribe to Shrey. भाई Shrey भी जुड़ेंगे हमें second half में, I believe so, for Oh, few wow. minutes. But Yeah. everyone in the chat, do let me know your predictions for the second half. Now that Pedri is out, I think they need some extra creativity in the midfield. But what is Fateh saying? I think we'll have goals in this half, and I think a score draw 1-1. Score draw, okay, 1-1. मतलब मेरा initial prediction था, लेकिन now that I'm seeing Man United playing this way, Yeah. और Barca might go a little bit ultra defensive, I think I might call I don't think the odd goal. Barca are going to be defensive. At least not at home. I don't think Xavi has it. That 2-1 Barca win, goes by Gavi, Leva and Rashford. 2-0 to Barca. Interesting. देखते हैं भाई. Again, मतलब I won't be surprised if that happens as well, क्योंकि remember we talk about passing lanes, और Rafael Varane भी yellow card में है. यहाँ पर they have a Gavi and a Lewandowski and Rafinha, who can, especially Rafinha can get in behind, सच में बोलूं तो. was a भाई bullet nice play shot. by Barcelona. Araujo with a cross. भाई See the लेकिन shot. well defended यहाँ पर Luke Shaw से. And shot! Oh, what a shot, man! What a brilliant shot that was by Rafinha. Like I said, right, Rafinha can be the danger man. You know what, Fateh? बहुत ही strange चीज बोलूं मैं. Now that Manchester United, देखो, Barca have doing brilliantly in the La Liga. कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता. और आई नो रफीनिया खाली 1 महीने से ज्यादा खेल रहा है कंपेयर टू अर्लियर इन द सीजन, बट वहां पर बारसा प्ले मोर पोजेशन फुटबॉल. यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड आर गोइंग 2-4-2. तो कहीं ना कहीं रफीनिया माइट बी इन हिज लीड्स एलिमेंट अगेन. Let's see. Which actually suits him. That was that shot and yeah. Again, मतलब I can see what Fateh said as well. I can see 1-1 goal coming each side. लेकिन मुझे देखता है odd goal होगा, and it might actually be on counter, which I would say Man United are slightly better, सच में बोलो तो, on counter. लेकिन हाँ भाई, nice take यार, man. Sancho showing some skills. भाई टाइम स्टैम्प मेरा 47-45, 47-46, 47-47. Van Bissaka with the ball. I think I'm lagging. Van Bissaka cross. Come on, what a mistake! And that should have been a goal. Araujo, bhai, how did he miss? Araujo with a brilliant
chance for Manchester United given, in my opinion, by Araujo. Araujo doesn't make that mistake usually. Araujo with 2 mistakes. Araujo पहले गया Malaysia पर, और I'm surprised Araujo, with all due respect, as a neutral, I'm saying Araujo, I think, was a very late challenge on Malaysia. I felt that. Ankit. Oh, come on. Why didn't he take a shot? Take the corner for Barcelona. मेरा timestamp है 48:40. भाई Fateh is about 12 seconds ahead of me. Okay. So I'm So basically people generally one follow move Fateh ahead of you. first. Yeah, what a shot by Rafinha. But you know what? Uh, it was a chance miss. Sancho should have scored. Sancho should have scored. I would say, I would even go so far as to say that Dortmund Sancho would have scored that. No, but the fact is, थोड़ा सा deflection हुआ. Will that be a issue or बहाने है मतलब Sancho के लिए? Goal. Barca scored. Corner. And guess who scored? See, Ankit, I'm not going to tell you. Leva? Don't tell me Araujo. Alonso! Get in, man! Alonso down the wing. Sorry, Man United fans. I'm not a Barca fan. I am an Alonso fan. Bhai Sahab, Alonso down the wing. Pablo Escobar, and people, by the way, everyone who questioned Marcos Alonso. Let me all tell you all. When it comes to set pieces, शायद ही कोई डिफेंडर है, और मैं सच में बोल रहा हूं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, शायद ही कोई डिफेंडर है जो सेट पीसेस में बेटर है. शायद ही कोई डिफेंडर है जो सेट पीसेस में बेटर है. रिपीट दैट. If I want, I can repeat it the third time. It is Marcos Alonso with the goal. Congratulations to Barca fans. Again, man neutral, but I'm just happy for Alonso. The guy has been waiting in the wings, and उसने किया है, and of course a good corner as well, I would say. Ankit, was Van Bissaka marking him? Van Bissaka को छुट्टी दे दो. Van Bissaka, but the thing is, it is a no-brainer. Alonso will be the winner. Rafael Varane should have marked Alonso. Why wasn't Varane on Alonso? I think Alonso or Lewandowski, two guys, who are a threat? Three people. Araujo, Alonso and Lewandowski. ठीक है, तो यहाँ पर मार्किंग गलत किया है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कहीं ना कहीं, लेकिन वो ये राइट बैक वर्सेस लेफ्ट बैक, आई कैन अंडरस्टैंड दैट एज वेल, बट अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले आई वुड से. And now, what is Manchester United fan thinking? What is a Jadon Sancho thinking? Araujo might have kissed Alonso कि भाई साहब, thanks man, I almost conceded a goal. और यहाँ पर Alonso doing it for Barcelona, man, absolutely. Rafinha यार, जैसे हमने बोला था, Rafinha has improved, and yes, he is good. Rafinha took the corner, Ashish. Congratulations, Barca fans. You are in the lead. Now the game will be even more interesting. Fateh. Yeah, totally. क्या लगता है, Garnacho on? Manchester United can rue all those chances that they missed. I mean, they only have themselves to blame for. Yeah, Weghorst and Sancho especially. You know what? Sancho skills तो अच्छा दिखाया, लेकिन I have a feeling they might actually keep Weghorst अभी. I don't think they'll take off Weghorst. I think they might take off Sancho and get on Garnacho. Shot, लेकिन छक्का के लिए. Casemiro का shot था क्या? Casemiro. Yeah. Okay, भाई सब लोग, everyone who kind of DM'd me as well as basically have been saying over the weeks by Alonso, नहीं चाहिए अपने को. भाई, I'm telling you, on set pieces, in fact in Europe. 1-1. Oh man! इतना सब बोलने के बाद में भाई फतेह giving all the spoilers. भाई फतेह spoilers मत दीजिए यार, मत request. I'm so sorry. Rashford and Alonso. After all those things, भाई Alonso beaten. And it's richly deserved, but what a game of football, bro. What a game, yeah. I hope we have a 3-3. I hope we have a 3-3. I think the thing with Barcelona is I think they've got a lot of gaps in their defense. Like, every time Man U get forward, it was every time Inter were getting forward. Oh, was that offside? No. Not off. नहीं यार, बाय बाय वो सब कुछ नहीं है अभी, तो देखिए. हाँ, ताहा खान भाई डॉर्टमुंड फैन है. Was Alonso beaten there? नहीं, sorry, ताहा नहीं, I got it wrong. Yeah, Alonso was beaten, no? Alonso was beaten. It was simply a through ball that Alonso got beaten hands down. As much as Alonso has been brilliant, we all know that when it comes to one-on-one, he's not the guy. He's not the guy for you. How can he play centre half?
भाई 1-1 अपनी प्रेडिक्शन थी दोनों की, याद है शुरुआत में? Yeah, but जैसे स्टार्ट हुआ है अंकित, आई थिंक यो श्रेय, व्हाट्स अप? कैसे अच्छा बजे भाई? एवरीवन हियर, अच्छा Yeah. बाय द वे एवरीवन, आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन हियर, डू यू नो रीट्वीट, डू शेयर इट। भाई यहाँ पर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, पैनल में ज्यादा लोग हैं देन द चैट, तो भाई ऐसा तो मत करिए भाई। 7,300 सब्सक्राइबर्स है भाई, कहाँ गए सब लोग? ठीक है, आई नो दैट वी आर नॉट बारसा फैंस यार भाई। फतेह देख रहे हैं फुटबॉल फ्रॉम मिड 90s, मैं देख रहा हूँ फ्रॉम लेट 90s, श्रेय देख रहे हैं फ्रॉम मिड 2000s। कम ऑन गाइस, वी नो सम फुटबॉल, आ जाइए। आई नो दैट आप बारसा फैंस और मैनचेस्टर फैंस देखना चाहते हैं, बट आई कैन गारंटी टेल यू ये पैनल ना, एंड मैं छोटी मुंह बड़ी बात लगेगी, गोल होने वाला है Ankit, मैनचेस्टर it's का, बाय द वे। end to end, man. What's even? Oh, चलो कोई नहीं। श्रेय guys. क्या बोल रहे हो यार? व्हाट इज योर समरी ऑफ द मैच? व्हाट अ शॉट रफीनिया, ओह व्हाट अ कैच डेविड डे यार, ओह माय गॉड। अरे भाई Listen, फतेह रिक्वेस्ट मैन, डोंट गिव yeah, स्पॉयलर्स yeah, मैन, yeah, ओपन yeah. Not रिक्वेस्ट। giving you spoilers. That's why I kept quiet this time. ओके, Like आई गिव यू ट्रिक, जैसे मैं करता था पहले, तो बेसिकली क्या है ना, ट्राई एंड रिएक्ट आफ्टर 10 सेकंड्स ऑफ व्हाट व्हेन इट हैपेंस। लेकिन रिएक्शन भी चाहिए लोगों को, ठीक है, क्योंकि आप स्पॉयलर देते हो, मुझे मालूम है 90% जनता अपने टीवी में नहीं देखती है, ये भी होता है थोड़ा, ठीक है, तो वो yeah. ट्रिक है थोड़ा सा। और बट ग्रेट टू एक्चुअली यू नो हैव श्रेय एंड फतेह बोथ यार। श्रेय क्या बोल रहे हो यार, मतलब व्हाट इज योर ओपिनियन अभी तक? I think what a match! Like this is a Champions League quality match. This is a top match. Like it's been a boring week. जो action हुआ ना कि भाई ये match में I think again awaken the footballing spirit in me. What a match! या इट रिमाइंड्स मी ऑफ ऑलमोस्ट वो बारसा इंटर वाला मैच जो हुआ था ना, ऑलमोस्ट उस मैच का हाँ रिमाइंडर Yeah, है। yeah, लेकिन totally. पेड्री End बीइंग to end. ऑफ यार, मतलब मुझे लग रहा था दैट विल बी अ ह्यूज ब्लो, लेकिन मार्कस अलोंसो, श्रेय इन्वॉल्वड एट बोथ एंड्स। Hmm. I think we all Chelsea fans know the best. Like द गुड defensively, he has a पार्ट ऑफ हिम problem. इज वेरी गुड, लेकिन द बैड पार्ट ऑफ हिम इज आल्सो वेरी But वेरी क्लियर। right now, Chelsea fans are missing that part of his goal scoring. Like that is a part we are missing because we can't score a goal. What about जस्सी का बना दिया his एंड टू एंड। Conte year when you won the league and he was the main guy, right? Defensively, he was sound that year. I हाँ think देखो, that year for विंग them, बैक their में back three. ही हाँ, नहीं श्रेय प्लीज कंटिन्यू। I think अंकित भाई जैसे आपके पॉइंट में कहूंगा उस टाइम हम बैक थ्री था और कांटे मैटिच थे लाइक मिडल में, तो उससे प्रोटेक्शन बहुत सारी थी हमारे पास। Protection both. Yes. Hmm. एग्जैक्टली। But he was there, na, that first year when Chelsea won. He was there. या लिटरली वो आर्सेनल के साथ हम मैच हारे थे, हाफ टाइम में लाया था अलोंसो को, ही वाज एक्चुअली द चेंज व्हिच एक्चुअली ब्रॉट अबाउट द चेंज ऑफ चेल्सीज फॉर्च्यून्स। अलोंसो वाज सो इंपॉर्टेंट। आई नो विक्टर मोसेस भी था, बट आई थिंक अलोंसो वाज द चेंज एक्चुअली, द मैन। अंकित भाई आई कैन नेवर फॉरगेट ही वाज टच लाइन से जैसे वो कर रहा था ना बार-बार जब आया था 3-4-3, दैट वाज अ टर्न और अराउंड। लाइक लिटरली पहली बार पोजीशनिंग बोल रहा था, मतलब आई वाज रिमेंबर दैट मैच लाइक यस्टरडे यार। बट कोई नहीं भाई, फ्री किक यहाँ बारसा को, let's see what happens. De Jong, you know that, अच्छा नहीं, De Jong नहीं लिया, surprising Rafinha has taken from this angle, I was surprised, लेकिन corner दिया है, Barca getting a corner again, is it another goal coming from Alonso? Let's see. Let's go. And it's Malacia marking Alonso. The height difference is. You were saying, Varane should be marking him. भाई why are Malacia and Fred next to Alonso? हो क्या रहा है? Just for pace, I'm guessing. But it's not needed, yes, a corner. What's wrong with them? क्या बोल रहे हैं? Manchester are not learning? Rafinha with a cross, low cross, लेकिन नहीं, easily defended. I think Rafinha wins the ball again, and okay. Has a lot of fans talk about Casemiro, like he's been good this match. So has he really been the impact guy for Man U this year? Yeah, great signing. Craig Casemiro यार, please. क्या पूछ रहे हैं फतेह, बोले? I think Casemiro, Ankit bhai, what a damn player. Like this guy Ankit bhai, what a damn Okay, signing. Like guys, but Shrey and Fateh, why don't you all think so that Ter Stegen at his near post questionable in that, or it was it is Rashford's questionable. bullet? मैं उठाने वाला था पर मैच चल रहा था बीच में, दैट इज क्वेश्चनेबल। कीपर शुड बी नॉट बी, मेरे ख्याल से नियर पोस्ट में नहीं बीट होना चाहिए कोई भी गोलकीपर, बॉल का टॉप क्लास कैटेगरी में शुड नॉट बी गेटिंग बीटन।
आई थिंक अंकित हमारा पता है कि हम जब गोल रिप्ले देखते हैं ना तो हमें लगता है वेरी डिफिकल्ट टू सेव है, लेकिन पोजीशनिंग इज अ मैसिव पार्ट एंड आई थिंक उसकी पोजीशनिंग उसने सीधा जैसे कहते हैं ना दिखा दिया रैशफोर्ड नहीं मार मैं थोड़ा इस साइड हूं पास इट, ये चीज करी। फतेह भाई, फतेह इज यूजुअली डूइंग व्हाट आई यूज्ड टू डू यार पहले। राशफोर्ड और भाई साहब, इज इट ऑफसाइड? बट दिस टाइम इट्स नॉट। मैनचेस्टर यूनाइटेड गेट द लीड एंड येट अनदर कॉर्नर, येट अनदर कॉर्नर। गोल किसका? कैसेमीरो? I don't know किसका है, but Rashford just, like, where is the Barca defense? I mean, this is just. It is Marcus Rashford, I think. Yeah, look at the way he just, like, wow. I mean, he just. Kunde at fault. Commentators are This saying. is Inter all over अंकित भाई, वही डिफेंस प्रॉब्लम चल रही है, like Barca are all over the place. All over the place. देखो ब्रूनो, अच्छा, it was Rashford. Rafinha था. Is that handball? नहीं, ब्रूनो got a touch. भाई own goal by Kunde यार. It's an own goal by Kunde. I think this was tough luck. तो क्या हुआ ना, देखिए, yeah. So what happened is Van Bissaka in a very strange way got a nick as well. तो first of all, Rashford beat the man. ठीक है, Rashford got the ball in. They're barring it. They're checking it. And then what happened is, I think Van Bissaka got a touch. उसके वजह से क्या हुआ, कुंडे पर लग गई rather than कुंडे defending it. And because of that, गोल में चला गया. I think Van Bissaka quite possibly, no, it's a goal. People, I think it's a goal. It's a goal, yeah. Match is started. Man, it is Manchester United 2 away at the Camp Nou. Oh भाई साहब, नहीं अभी मैच खत्म नहीं हुआ यार, मैच खत्म नहीं हुआ है. It's just 59 minutes. I'm telling you, the match is not over, and that is why this match was so awaited for, bhai, for a reason. But the way it's going, Ankit, I wouldn't be surprised if Man U like get one or two more goals. I mean, we at Inter have only ourselves to blame for not winning that game. That should have been won, and I don't think United will be making those same mistakes that we made. Yeah, I think Inter could have won that game 4-3, 5-3. Like that was fantastic performance. Yeah. And मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आप दोनों से, लाइक क्या आपको ये लग रहा है कि गेम तो हमें बहुत अच्छी लग रही है, एंड टू एंड चल रही है, बट क्या ये इसलिए कि यूरोपा लीग मैच है, प्रेशर नहीं है? क्योंकि शायद चैंपियंस लीग का मैच होता तो दोनों साइड मोर केयरफुली प्लान्ड होती. नहीं, I don't think so. I think this is the Barca way. As Xavi is, I don't think he's got that structural organization at the back, but he's good going forward. I think Xavi as a manager so far, from what I've seen in the Champions League, and I think it's the same. Oh, Van Bissaka with a shot, yaar, wide. Deflection. कोई नहीं. श्रेय, मैंने आपको एक ट्वीट भेजा यार. If you can just help me retweet that, will be helpful. Yeah, sure. I'll just check it. अभी भेजा है, DM किया आपको. And would we say Rashford is the man of the match so far? The way like he's been in both the goals. Rashford has been the man in Europe. Yeah. I would go as far as to say that. मतलब Rashford has purple patch and a half, yaar. Yeah. Very impressive. Yeah. Utkarsh CG, यार, Utkarsh बोल रहे हैं, I'm surprised, but at the same time not surprised. Utkarsh is a Bayern fan, for people who don't know. Big up to Utkarsh. तो बोल रहे हैं भाई बारसा को जीतना चाहिए because they win the Europa League and then we meet in the Super Cup. भाई साहब, that is ऊंची thinking. God, that is, my God, like this meme, like, and I have never understood this rivalry, but I'm loving it. The Bayern Barca rivalry, it's beautiful. Ashish, support is good, I know that, but at the end of the day, भाई Man United, अगर आप बोल रहे हो ना counter और away, Man United are one of the better teams. वो हमने डिस्कस किया था प्रीव्यू में, याद है तो. और बारसा एट होम इन यूरोप, वेरी सरप्राइजिंगली लास्ट 2 इयर्स के लिए काफी बुरे है ना. तो आई थिंक कहीं ना कहीं डिफेंसिवली यार, मैं वापस से टैक्टिकली आई नॉट सरप्राइज फतेह एंड श्रेय दैट आफ्टर पेड्री वेंट अवे, Barca did not ask Xavi to kind of tuck in into an extra midfielder. Yeah, you've been saying that, and that is what they need apparently, like the way they get. But I know, मतलब कॉर्नर से आया था सेकंड गोल, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन फिर भी यार जो फर्स्ट गोल था फॉर एग्जांपल, रैशफोर्ड मतलब he's been unplayable, let's be honest. Absolutely, I think. Okay, Kessie doing well in a moment. और फ्रैंकी बहुत ही डीप ड्रॉप किया by the way, that is quite apparent, right?
क्या लगता है श्रेय, क्या चेंज होगा अभी? कुछ ना कुछ तो 63 मिनट्स ऑन, समथिंग गॉट चेंज नाउ, राइट, फॉर बारसा। आई थिंक जैसे फतेह भाई ने कहा था, आई थिंक बारसा तो अपने प्ले में खेलेगी एंड नॉट हैंडबॉल। you know what, we cannot take our eyes off this match almost, right? वो वाला वैसा मैच है। माय गॉड, अरे भाई, रैशफोर्ड थ्रू, काउंटर मैन अगेन, कुंडे। अरे भाई, इज दैट अ चैलेंज? that's a penalty. That's what I was wondering. Is that a penalty? There It's was not a a shoulder appeal. push for sure. It's not a There was shoulder an push for appeal, sure. but there was an appeal in the Man U box also by Barcelona for handball, and then now an नहीं, appeal. हैंडबॉल तो नहीं था। इट वाज अ क्लियर शॉट बाय लिटरली 2 feet। मतलब Okay. that is not given generally, and plus वो ball, I think ball was near his hand was near his body। So is the referee waiting for the ball to go out, or there's going to be no VAR? नहीं, वार मीनवाइल इज चेकिंग और उसके कान में बोल देंगे। हाँ, अगर वार बोलती है थोड़ा रुकिए, वी वुड लाइक टू टेक अ क्लोजर लुक, देन द रेफरी स्टॉप्स द गेम। बट अगेन, हु नोज, राइट, व्हाट हैपेंस? वार इज वी ऑल नो इट इज। एक सेकंड ना। Come on. Give them a. अरे फ्री किक मैन, व्हाट अ पोजीशन, अलोंसो। नहीं, ये That is पोजीशन पे Alonso. लेवेंडोव्स्की। But they need to show us the penalty wala wo. अभी बात कर रहे हैं, राशफोर्ड बोल रहा है क्या हुआ, तो आप देखे नहीं, व्हाट इज हैपनिंग? I don't. एंड राशफोर्ड इज राइट। ओ But is it फ्रेड, outside the box or is it inside the box? इफ इट्स आउटसाइड, Outside the box. या ही Outside the सेव्ड, box. लेकिन ही शुड हैव गॉट कार्डेड मैन। ही इज लकी मैन, कुंडे has had a tough game, I must say. Yeah. Kunde I think is very Bayern lucky, Real people. has been a classical European rivalry, but of late, Bayern have just not gotten anything out of Real. Because I remember way back in, like in the 99-2000 season, they played 4 times. Bayern won 3 times, but still Real were the champions of Europe. Just one victory over Bayern out of 4 येलो games. कार्ड किसको दिया है? कैसेमिरो Casemiro को. फॉर डिसेंट, आई सपोज, नहीं? Hmm. क्योंकि फ्रेड, आई एम वेरी सरप्राइज फ्रेड डिडंट गेट अ येलो कार्ड। बाय द वे, एरिक टेन हाग आल्सो गेट्स अ येलो कार्ड, और आई थिंक एरिक टेन हाग हैज अ पॉइंट। आई थिंक कुंडे बहुत लकी है, मतलब रेड कार्ड नहीं था क्योंकि सेंटर हाफ वाज कवरिंग हिम, आई अंडरस्टैंड दैट। But इनके ना ये जो इनकी कोटेशंस होती है कि सेंटर बैक इज कवरिंग, जितना मुझे लगता है देयर वाज नो चांस सेंटर बैक कुड कवर रैशफोर्ड, जिस स्पेस पे रैशफोर्ड भाग बिकॉज रहा इट्स था. रैशफोर्ड, राइट? अब बिकॉज आप रेफरी होते तो वैसे यू कैन नॉट बी सब्जेक्टिव, यू नो व्हाट आई मीन, यू हैव टू गो विद द पोजीशनिंग। तो पोजीशनिंग से ही जाता है, आप नहीं बोलते अरे रैशफोर्ड होता तो वो बीट कर लेता, वो गलत हो जाएगी। तो आई एग्री विद द Yeah. डिसीजन अबाउट नॉट गिविंग अ पेनल्टी, नॉट गिविंग अ रेड कार्ड, राइट? एक तो बाहर था, Christensen is on. Yeah. लेकिन Definitely. हैंड्स डाउन येलो कार्ड मोमेंट था। इनफैक्ट मैं ये भी बोलूंगा, फ्रेड को मिला है क्या येलो कार्ड? I think Yeah, I referee, think I think कासेमीरो ने कुछ भी नहीं कहा, ब्रूनो था जो डिसेंड कर रहा था, Luke कासेमीरो Shaw was maybe. ओ अच्छा, ये तो आर्सेनल वाला मोमेंट हो गया। अच्छा, बाय द वे, बाल्डे कमिंग ऑन, क्रिस्टियनसन कमिंग ऑन, राइट? अलोंसो इज आउट। भाई सुन लिया ताहा खान का, अलोंसो इज यार आउट, एक फ्री किक तो लेने जॉर्डी देते, अल्बा इज आउट। एक फ्री किक तो अलोंसो को लेने देते, दैट इज इसको बेस्ट पार्ट. नहीं, लेकिन वो राइट साइड था, आई थिंक राइट फुटर विल टेक, थोड़ा सा राइट, मतलब लेफ्ट साइड है तो राइट फुटर विल टेक एनीवे। तो आई थिंक लेवेंडोव्स्की होना चाहिए, लेकिन अगर रेफिनिया लेगा तो श्रेय हैज अ पॉइंट। I think has to be Rafinha. और भाई उत्कर्ष प्रॉपर वन ना, ये क्या हो रहा है भाई? उत्कर्ष फॉर्म में आज। There is a clear foul on Rashford. A free kick should have been given 100%. In fact, yellow card था for Jules Kounde and he was escaping. Not just that, मैं बहुत ही shocked हूँ. How has Fred not got a yellow card for the foul or for this free kick? Fred ने clearly check किया. It was a proper check to Gavi. It is the rule book में yellow card यार Fred का. I think referee control lose करे, he is not able to handle इतनी high tempo game. Fast. Yeah. मतलब ब्रूनो के जगह कैसेमिरो को येलो कार्ड दे रहा है अगेन, मतलब इट्स डिफिकल्ट। भाई व्हाट अ फ्री किक, और नहीं, जस्ट अबव Stunning लेवेंडोव्स्की free दिया। kick. Almost. हाँ, फतेह फील फ्री टू रिएक्ट ब्रो, बट लेकिन वही दैट 10 seconds later if No, it's I keep possible. quiet. My reactions are I keep quiet though. No, chat is here to see your reactions, bro. Come on. Yeah, so I react, but I don't say. नहीं रिएक्ट करो, थोड़ा सा हो सके तो जस्ट डिलेड बाय a few seconds. Think of yourself as a bot. If Utkarsh is I a know, Bayern putting fan Fateh in a difficult and he job. says I still believe in GOAT striker, by GOAT does he mean Eric Choupo-Moting? Leva is ex Bayern, na? I'm I guessing. was just Utkarsh. joking. I was just joking though because
You know, like they don't miss him at all. Okay. हाँ भाई एक तो आई थिंक इन अ वे बोथ द टीम्स हैव काइंड ऑफ गॉटन ऑफ येलो कार्ड वहां पर. हाँ मतलब कैसेमीरो को मिला तो थोड़ा मैनचेस्टर हैव गॉट द बैड रिजल्ट. अच्छा श्रेय, आई डोंट नो इफ यू नोटिस्ड यार. नहीं, मैं नोटिस करा था स्टार्टिंग में ही. But good to see the Club World Cup batch. That's the last bit of thing that is left with us right now. हाँ एंड फॉर अ व्हाइल मैं कॉन्फिडेंट हूँ. व्हाट अ शॉट. अरे भाई साहब, फ्रेड ऑलमोस्ट. मेसी होता तो गोल था ये. सिमिलर फ्री किक टू दैट अगेंस्ट लिवरपूल. या रिमेंबर दैट. बिल्कुल भाई. सब लोग जो भी है, अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू लाइक द स्ट्रीम. कम ऑन. With this wonderful panel, we must be having more people watching 100%. nahi? The thing is, agar Messi hota na, तो I think no team would have dared to be this expansive at the Camp Nou. You know, like teams would have been more circumspect, at least not been this attacking. Maybe Bayern would have been, but you know, and I see now that the whole the aura of the Camp Nou for away teams. You know, I think football has evolved that much that teams can now say, okay, we are going to go to Camp Nou and play our football. Like, and that was something that never used to happen, say 3-4 years. Uske tak pehle tak to. And you talked about it, Ankit, you know, that 99-2000 Chelsea game also. Like when you went to the Camp Nou, you just couldn't play football. Like Barca would not give you the ball. But now I think coaching has evolved to such a level that nobody, you know, everybody's like, we'll keep the ball. Again a free kick. Oh, that's सर्जी रोबर्टो भाई, क्या था वो. आज मुझे अभी स्टैम्प लगा था. Tactically, what has happened, people, if you can just figure it out, but basically what has happened, Ansu Fati has come for Frank Kessie, right? Jordi Alba has directly rather been replaced by Balde and Christensen Alonso. So basically it's like for like only almost, lekin Gavi coming to midfield and Fati going on Gavi's place, right? Yeah, probably वही लग रहा है. ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ कर दिया है, in midfield. In fact, the need is for them to go expansive. So I can understand why these changes have been made and not an extra midfielder. No disgrace, that's a penalty and card for Kunde. नहीं penalty नहीं थी क्योंकि outside the box. Yeah, तो penalty I think that is why VAR didn't pull it back, because for a free kick they don't. See, that is the double standards of VAR for you. So, but I understand yellow card 100%. Orange card, like, you know what I mean? It was a little bit over the edge. Lekin definite free kick tha. Bayern are considering Leva for Chupo's backup. Just kidding. I still miss Leva. Okay, I got it. Refereeing. भाई देखिए यार, refereeing तो भाई, let me not get started. Yesterday's match. Anyway. Nice defending यार, nice defending यहाँ पर. Malaysia doing well, huh? Beautiful from Man U, man. I mean, if you see this move, when you guys see this move. Yeah, now it's happening. Oh my God. Why, this is like a typical Ten Hag, huh? Remember, I think Xavi's been outcoached. I think that's. But you know what happened? Killer blow होता है ना, तो killer blow हो गया. तो at the moment जहां पर वो एक midfield ला सकते थे, I think firstly he didn't realize. मतलब हमने बात की थी हाफ टाइम में, जावी को करना चाहिए था मिडफील्ड को भीड़ भाड़ करवा दो, क्योंकि स्पेशली पेड्री नहीं है तो दे नीड क्रिएटिविटी एज वेल, नॉट जस्ट टेक वन एक्स्ट्रा मैन मिडफील्ड. और ब्रूनो एंड कैसेमिरो गेटिंग दोस पासिंग लेन्स इज समथिंग दैट दे हैड टू स्टॉप. As much as De Jong has done decent, लेकिन I think they need an extra man for the defense factor. Malaysia getting a yellow card, by the way. So I think, I agree with you. Erik ten Hag has probably outthought नहीं बनूंगा. He has reacted quicker than Xavi. नहीं तो the thing is, सागर ऑरेंज इसलिए मैं बोला, देखिए, because it's Rashford. श्रेय वही बोल रहे थे, पॉइंट बोल रहे थे, that Rashford, if you are a Manchester United fan or if you're a Premier League fan also who watches every game of Premier League, एक और येलो कार्ड by the way यहाँ पर, this time कौन, गावी को येलो कार्ड. हाँ, by the way, Gavi, remember there was a call कि early on येलो कार्ड क्यों नहीं मिला, तो now Manchester United fans will be like, come on. और यही चेक फ्रेड ने किया था गावी को. To be honest, Manchester United fans, भाई, Fred escaped a yellow card. Let's be honest. लेकिन आई एम बीइंग न्यूट्रल हियर. ओके सागर, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, रैशफोर्ड है, हम सोचते हैं कि वो थ्रू ऑन गोल नहीं.
The thing is, positionally, there was a centre back who was almost in line with Kunde. I know, mushkil hota for him to cover Rashford, but it wasn't like, sure shot. It was like a grey area. इसलिए orange card मैंने बोला. तो इसलिए मैं बोलता हूँ. But I agree 100%. It was a blatant foul. It was a blatant yellow card and a free kick होना ही चाहिए था. Man United are looking strong, absolutely. Union Berlin are over Ajax in attack. Ajax only better in possession. Okay, भाई यहाँ I पर think interesting what a point. story Union Berlin has been like. Like right from my childhood, the only team from Berlin has been Hertha Berlin, and the last 2-3 years, the way Union Berlin have just come up, and wow, what a story! बिल्कुल. Again, people, don't forget to like and subscribe in case you're not to our channels as well as the panel's channels. भाई Shrey का channel is there right in the title. एक second लगेगा भाई. Come on, let's subscribe to Shrey FC and get him to that number as well that he deserves, as well as us on both the channels. Look at Nice Casemiro run. bossing Gavi around. Oh, Casemiro and Varane. This moment, is for the Real Madrid fans. Just watch But this you know guy. what? People have to be careful. A lot of people are on yellow cards, Avi, huh? Yeah, but I mean, I think that rivalry. Look at him. Like, look at him. Just Yeah. Well, he's toying almost, I must yeah, say. he's trying, and look at him and Varane. The reaction. Yeah, but to be fair, Gavi यार सच में literally बच्चा ही है, as much as he's a future great in my opinion. Do you think? Great. Gavi, I really rate him, यार. I really rate him. Because the work rate he has, plus the fact that he's able to, kind of get in that space. But also, I think Ankit, do you think Union Berlin can actually win the Bundesliga? Like, do you and Shrey, No, do you I don't think so, bro. I think quality will come through. Barca, Bayern का. Mm-hmm. I think it's about Rashford and Mbappe being friends, bro. Nothing's going to happen there. Both are too similar. नहीं होने वाला. क्या लगता है श्रेय? In fact, I the think way Rashford is playing, man, you need to give him a salary bump and keep him. Like, it would be stupid to हाँ, lose him. he's going to stay. मतलब I know like Mount वो भी बहुत news आई है कि यार even he's not kind of convinced by the talks which are going on. But I think it's a no-brainer. The way he's playing, and again remember, he's a Manchester United guy. As in same thing for Mount, you would say, right? So last match में दिखा क्या हुआ? Fateh bhai. अरे भाई साहब, भाई फतेह लाइक कर भी रहा है और नहीं भी कर रहा है भाई. रफीनिया, पीपल रिमेंबर, कर दीजिए उसी बात पर लाइक, क्योंकि वी ऑल सेड दैट रफीनिया विल कम टू द पार्टी. I think Rafinha did Leva get a touch? I think I Yes was to all. just Yes. waiting for the goal. Fateh bhai ne ye kar diya. I thought. Bhai, let's react together, bro. That's what people are here for. But anyway, it is basically by Kunde kind of correcting his mistake. Kunde has not I been think it great. was a सच में mistake बोलो of तो. Casemiro. Like surprisingly Yes. passed. Yes, It that was a when he mistake of gave the Casemiro. ball away. Yes. And Yeah, just now but he was being smug, with Gavi and that Varane, the whole incident. And then I think it was his bad pass. Yeah, and I think he's not even touched Lewandowski. That's Rafinha's goal. Rafinha's goal, yeah. Yeah, it's Rafinha's goal. People, Rafinha, there definitely. Gavi won't play next leg. Maybe Pedri might also be absent. I wonder how will Barca react. Oh, right. That's a good one. VAR is confusing as hell in UEFA. 100% Sagar. 100%. VAR is shit. Let's be honest. Why doesn't Leva play for us like Bayern? Bhai, kiya na abhi. Abhi kiya na, he would have, if you had touched that, who knows that it would have gone, wide. I'm just saying. Kiara, he did his job as well. But congratulations for Barcelona fans यार, 2-2 and what a game of football. What I a love game. ETH. अर्जस अभी concede कर लिया लेकिन कोई नहीं. But 2-2 also, I must say that ETH has done really well. तो किस पर, कैसेमिरो पर ब्लेम जा रही है इस गोल के लिए? वो पास जिसने भी वो गलत पास दिया ना, वो शुरू वहां से हुआ ना, राइट? शुरू कासेमिरो से हुआ ना, एंड आपने बादशाह को चांस दे दिया एकदम काउंटर अटैक के लिए. एंड I think अच्छा फैक्टर है. Before that, Casemiro was treating Gavi like a kid, or now suddenly does a bounce back. Exactly, like karma, like like एकदम instant karma. Yeah, you can say that. But I think कहीं ना कहीं कुंडे को भी देना पड़ेगा यार. कुंडे kind of stepped into midfield.
you know, considering his match जैसे गया, मैं expect कर रहा था कि maybe he'll be low on confidence. ओहो, far post में almost यहाँ पे Sancho. I think Sancho will be taken off. I feel abhi. I think it's time for Garnacho to come on. What do your people think? Garnacho time? Yeah, please. Sagar is I mean, agreeing. Sancho's been. कौन है बेंच में देखते हैं? Options क्या है? Wait a minute. Am I seeing right? Have Manchester United not made a change till now? No, they haven't made a change. Oh my, ये क्या हो रहा है? भाई अब तो रिएक्ट करना पड़ेगा. I know, I understand 2-1 थे. एक सेकंड Rashford. और भाई what a miss! Oh. For Rashford standards, that's a miss. But then Weghorst's run wasn't all that special there. But okay. Sancho with a pass to Rashford. I know Araujo got the dive. Rashford should have taken That's a difficult shot. touch in, right? That's a difficult shot, Ankit bhai. नहीं, but the space that he had, I think उसने decision wrong किया. What I'm trying to say is, what Rashford had the thing when Araujo dived, na, Rashford should have taken it this side. Oh, nice save, yaar, but David Dia counter में. Man, this match is absolutely brilliant. This is a great game to watch. और मैं भाई यहाँ पर चैट को हैंडल कर रहा हूँ और भाई आप लोग हैंडल करो भाई, सब लोग कम ऑन उसी बात पर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, एब्सोल्युटली हेल्प्स. मैं खुद देखना चाह रहा हूँ भाई मैच. Big up to Ter Stegen, like that's a fantastic goal kick. That is a fantastic goal kick. Like Ederson को देखते तो मैं ज्यादा तक देखते हुए, लेकिन that's a fantastic goal kick. No, was that even a goal kick? to be दोनों का बात करेंगे, अपन करेंगे. अंगे भाई यूनाइटेड ट्रिक नहीं मिस कर रही है, लाइक वैन बिसाको को पिच पे रख के आई थिंक अब अटैक करके डालो को लेके आ सकते हैं. डालो वुड हैव बीन अ बिग पार्ट. जैसे अभी स्पेस जो मिल रही है ना बारसा के, बारसा अटैक कर रही है, तो आई थिंक दिस शुड नहीं, मैं तो आई डोंट अग्री विद एरिक टेन हाग इन वन फैक्टर. लाइक हाउ हैज ही केप्ट वैन बिसाका ऑन टिल नाउ? मैं सरप्राइज्ड हूं. I understand that basically, Gavi has been playing on the wing and now Fateh has come on. What a shot by Fateh, if I'm not wrong, but wide. But cool. I agree. Like, I think that Dortmund is obviously, like, Bayern fans would not like to lose to Dortmund. But yeah, if Union Berlin win it, Leipzig, I don't really want Leipzig to win it, considering their model and all the controversy about Leipzig. मतलब German football से agree नहीं करोगे, मतलब they don't go in the German model. I understand, लेकिन world football में तो होता ही यार. I know थोड़ा unfair हो जाएगा for Bundesliga, but the teams that I follow in the Bundesliga, Leverkusen, Dortmund, Stuttgart, and Kaiserslautern, and all those teams. So I've never been a Leipzig fan. So I'd be okay with Union Berlin winning it, Dortmund winning it. The change coming in finally, Garnacho coming on, I believe, for Sancho. Like for like. Garnacho coming on for Sancho. Okay, like for like. Kind of expected, na? I think अभी 2-2 है तो Weghorst being there as a plan B is important as well, नहीं Shrey? I think they need Weghorst for the physicality जो वो लेके आते हैं. मिडफील्ड में थोड़ा जो आजकल वो प्रोवाइड कर रही है, like Ten Hag has to be given credit for the innovation. Like this guy has turned Luke Shaw into centre back, Weghorst into midfielder. Like यार क्या मैनेजर है ये? Like top manager, and I hate him. नहीं, actually to be honest, last season देख ही रहा था top manager, I hate him. Last season I think we had spoken, right, Fateh, for Ajax. Sebastian Haller used to do that job. Sebastian Haller. Tadic used to be ahead of him at times. And Ajax was so pretty on the eyes, and I can see the same happening at Man U. And I think they've got a beautiful project going through now. And they've started buying sensibly. Casemiro and... भाई लास्ट के 8 मिनट बाकी है. I think Dortmund का जिससे मैंने कल देखा ना, no disrespect, but I think Dortmund defensively caught out. Like Bundesliga. I am already calling it. 4-1 win to Chelsea. We could have beaten them 3 or 4-1. एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? रफीनिया बहुत ही भाई डेरेन बिग अप. रफीनिया बहुत ही ज्यादा गुस्से में कि भाई हाउ डेयर यू टेक मी ऑफ वाला चीज, लेकिन बाद में ताली भी बजा ली है. Yeah, Shrey, I agree with this. Bro. I only saw 45 minutes and I thought that Dortmund's defense is really suspect. He's not happy, man. Rafinha is not happy. वो जावी को जैसे ताली भर के गया भाई. He is not happy. और I can understand why. Rafinha, सच में बोलूं तो he's had a good game, man. मतलब Malaysia versus Rafinha is on the battle. Let's be honest. क्या हुआ भाई? फतेह को देखते ही डर लगता है कि क्या हो गया भाई. गोल किक था, मतलब गोल किक से क्या हुआ? The player not being happy, that shows that he cares.
चलो एनीवे फरहान टोरेस है तो अभी क्या राइट साइड फरहान टोरेस, हाँ लेफ्ट साइड राइट फाटी से वही भी होगा जाना चाहिए वैसे तो। बेसिकली यहाँ लाइक फॉर लाइक ही किया है। देखो Good one, good one. टैक्टिकली आई वुड लाइक टू से दैट I don't think Xavi has changed much tactically in the match. So कहीं ना कहीं ये individual brilliance और Man United mistakes has cost. Free kick in a good position. Casemiro is on a yellow. Yeah, He is. there लेकिन has to नहीं be दे रहा another है Is ना। yellow. that second yellow? Then why is that not a second yellow? I'm myself not sure. There has to be second yellow. एक सेकंड दे, अभी तक तो दिया नहीं मेरे स्क्रीन में, नहीं दिया अनलेस फतेह नहीं का आ दिया गया है। नहीं। डजंट मैटर डेरेन, टीवी का क्यों वेट कर रहे हो भाई, डोंट वरी अबाउट इट। मतलब आई नो दैट आप टीवी में देखते हो, दैट्स व्हाई यू एंजॉय द वॉच लॉग्स मोर, आई अंडरस्टैंड टोटली। बट जैसे मैं बोल रहा हूँ वापस से, कल भी बोला था मैं, एज सून एज पीपल काइंड ऑफ गेट अस टू दैट लेवल वेयर वी आर एबल टू अफोर्ड अ न्यू टीवी एज वेल, आई विल गेट अ टीवी एब्सोल्युटली ब्रो, विद ऑल योर हेल्प एज वेल, एवरीवन इन द चैट एंड एवरीवन हियर। लेकिन द रियलिटी बीइंग दैट, ये मुझे ये मालूम है, मैं एक्चुअली डेरेन मैं बहुत लोग से चेक किया था, 90% जो अपने लोग हैं ना सब्सक्राइबर्स, वो लोग ऑनलाइन देखते हैं, तो दे आर ओके फॉर मी। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ टीवी, लेकिन मेरी पैनल और मेरे चैट में 90% ऑनलाइन देखते हैं, तो मैं वहां पर मैं बोल रहा हूँ इतना जल्दबाजी नहीं है, तो देखते हैं क्रिकेट वापस से शुरू होगा ना अभी वॉच अलॉन्ग्स, तब शायद हाँ टीवी लेना पड़ेगा मुझे। Is Shrey also watching online? So you also behind, na? श्रेय Yeah, एंड मी I was. आर ऑलमोस्ट टुगेदर, 40 विद फ्री किक, ओके चलो कोई नहीं। I think that should have been a second yellow. Like I'm a bit Hmm. surprised referee से ना समझ नहीं Yeah. आ रही. He's not able to control the game. क्या स्पॉइल नहीं करना है, नहीं कोई नहीं, डॉर्टमंड को पेलेंगे हम ब्रिज पर, चलो I think so. होप सो। I have like a feeling that the way भाई the एक first और फ्री match किक, was, I think I'm already calling it either 4-1 win to Chelsea or a फतेह नो 3-1 win. मैन, वी No? कांट बाय अ विन, आई एम टेलिंग यू, बहुत डिफिकल्ट है अभी 3 हफ्ते हैं मैच में. ब्रो, वी हैव वन लाइक 2 in 13 man, But you know, I'm gonna and don't Dortmund worry. have Like won 7 and 7, no league I'm form. confident that we're going to smash Southampton 5-0 this week. Confidence will build. देखते हैं, लेट्स सी, विल टॉक अबाउट इट कल एब्सोल्युटली। बट एनीवे कमिंग टू द फ्री किक, भाई लास्ट के 5 मिनट है, Let's go. रेफरी क्यों इतना गुस्सा कर रहा है, रेफरी को माता आ गई भाई, रेफरी के अंदर माता आ गई, क्या हो गया? He does this even in Serie A. Like sometimes, you know, like I've seen him. What is this? I think for big games they need to have better referees though. Oh, I'm seeing something. Oh man, oh. That would have been own goal. Oh, that was close. How did that not go in, yaar? This is some game, man. This is. अरे भाई, see that is why Barca in Europe is missed. Let's be honest. Manchester and Barca both are missed in Europe as much as we are oppositional fans. Again. No way. भाई that had to be फतेह आप scored. पूरा रिएक्ट कर लो यार आप ऐसे भी दे रहे हो। अरे तो अभी कैसे हो गया, how do गोल हो I- गया, नहीं हुआ पिंग पोंग चल रहा है, इसको बोलते हैं पिंग पोंग। It's amazing. You know, like this is beautiful. Oh, this is too much to handle. I am a Absolutely. neutral. What a through pass, लेकिन nice interception यहाँ पर, but again missed out. Well done to Barcelona, though. You know, like they've in the second man, half they've almost. gone toe to toe with Man U. Oh man, this is going to be some watch in the last couple of minutes now. ठीक है? I hope both teams score 1-1 each. You know, like 3-3. Let's go for a 3-3. But I think at Old Trafford, I think this match is going to be interesting because United this season, मेरे ख्याल से low block बहुत अच्छा खेली है, and Inter के खिलाफ भी Barcelona got frustrated. 2-2 result is not in their favor. Like United can play low block. And did you all realize that Weghorst has become a CDM? Weghorst has turned into a CDM, people. Breaking news. And अगली गेम के लिए लिसांड्रो भी आ जाएंगे, सेबित्जर भी आ जाएंगे। हाँ अभी तो खैर मतलब ये गोल होने वाला है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, होना चाहिए,
बट नहीं होगा अभी नहीं होगा. आई थिंक बारसा हैव गॉट द पीपल बैक. देन वही है, मैं बोल रहा हूँ ना, अगर साउथहैम्पटन से हारते हैं ना, इट इज लिटरली इन एवीबी मोमेंट. ठीक है. एंड इफ साउथहैम्पटन से हम जीतते हैं, डॉर्टमंड से हारते हैं, तब तो एनीवे इज आउट. बट अभी के लिए नो वही पॉइंट. बात है ना, उस टीम में लीडर्स थे, यहाँ पे ना लीडर्स की कमी लग रही है. लाइक हु विल बी द वन हु टेक्स द टीम इन द फाइनल स्टेजेस? थियागो सिल्वा के अलावा कोई भी नहीं लग नहीं रहा नहीं, मुझे. यहाँ पर टीम की बात नहीं कर रहे हम लोग, कर रहे हैं लाइक फोकस टू द मैनेजर. लाइक साउथहैम्पटन से भी हार गया और डॉर्टमंड से भी हार गया, देन तो कम ऑन, आई डोंट थिंक इट पॉटर शुड बी देयर. आई यू नॉट अ फैन, लेट्स बी ऑनेस्ट. If he loses But both to Southampton and Dortmund, who comes? 100% Who is out. comes? Like, what are the names that you I like? don't What are the care. I don't no? care. He will No, take कोई my नाम club तो to होता है, like mediocrity. somebody that you believe. Get John Terry for part time for this season. I don't want this club to get into rubbish mentality. Again, हुआ नहीं है. I know hypothetical बोल रहे, but anyway, last couple of minutes, so let's get back to the game, people. अभी के लिए लेकिन keep him of course, but कोई नहीं. Like they to be fair, he has been unfair to both the teams. The referee, I don't know if people agree. Yeah. And he has thrown मतलब yellows like anything. Like every time is yellow. And important stages पे जैसे अंकित मैंने कहा था, फ्रेड पे भूल गया, कासेमीरो पे भूल गया येलो देना. हाँ, कुंडे और फ्रेड should have got booked basically. इनफैक्ट गावी का भी आर्ग्यूबली, मतलब आई नो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस बोलेंगे भाई ही शुड हैव गॉट 2 येलोज. भाई इंडिया से है भाई, फतेह डरेन क्यों? व्हाई इज दिस क्वेश्चन कमिंग ब्रो? मच लव टू डरेन, बट यू बीन हियर ब्रो. जोक कर रहे क्या? पता नहीं, कोई नहीं. No, Derain, I think added me on Instagram. So. Oh, okay. Anyway. Good game. Very good game. 4 minutes of लास्ट added on. कितना स्टॉपेज टाइम कितना होगा? क्या बोल रहे हो आप लोग? 4. अच्छा, पूछ. अच्छा फतेह थे, लेकिन मुझे तो I मालूम need है to sync 4 with you मिनट हो guys. गए यार. मुझसे हो नहीं रहा अरे है. हमें भी मालूम है. अरे कोई नहीं. 4 मिनट्स ऑफ स्टॉपेज टाइम है. You guys saw that chance ना जो अभी मिस हुआ है. Yeah. नहीं, was it a chance? It was well saved, na? No, they didn't give a corner. क्या I था think the ये? shot could have been hit better. जो भी like they missed the shot. No, Barca hit straight at David De Gea. I thought David De Gea को लगा. Same. पता नहीं लगा नहीं. तो ऑफसाइड था मतलब, या फाउल होगा. लगा तो क्लियर ही है, रिप्ले में दिखा रहा है, पर कोई नहीं. Okay, he's an Italian fan for sure. Yeah, totally man. Agreed है उत्कर्ष 100%. कहीं ना कहीं बुंडेसलीगा आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट. Yeah. बट बुंडेसलीगा में जो कल रात को एटमॉस्फेयर था डॉर्टमंड में, इमेजिन वो एटमॉस्फेयर होता नहीं अगर वो 50+ वाला रूल नहीं होता. कहीं ना कहीं दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, दैट द फैंस फील दैट इट्स आवर क्लब वाला चीज इवन मोर विद दैट. And I think Bundesliga the best चीज रहेगी 50+1 के अलावा भी for someone other than Bayern to win it. Like they need it very badly. Like Syria जब से Juventus has lost the throne, the interest has been there. Like interest लाने के लिए you have to have some other winner, and I'm cheering on Union Berlin. What a challenge by Van Bissaka यार. भाई साहब अभी how has he completed 90 minutes? लेकिन I believe he's got a throw in conceded and Barca have a throw in. भाई अभी भी 2.5 मिनट बाकी है, 2 मिनट बाकी है अभी. देखते हैं क्या होता है भाई. आई थिंक 2-all will be a fair score line. I don't know people. I still feel Manchester United would feel a little bit unlucky. I have a मतलब पता नहीं, considering it's an away. Or what, almost Ansu Fati. What a winner that would have been. Took a deflection though. Corner. Okay. So important deflection. वरान का आएगा नहीं? एक सेकंड. वरान का था. मुझे 1 सेकंड का लगा वरान का हाथ में तो नहीं लगा ना. Okay, got it, Ashish. Barca going all for it now. They've got 1 minute left. What a time to grab a winner though. That one, man, Garnacho should have held on to that ball.
See, that is where experience. मैं फतेह को देख रहा हूँ ज्यादा मैच से. नहीं नहीं, it's a corner I guess bro. भाई corner है, अभी भी 45 seconds left people. Absolutely भाई, match has delivered the hype that was generated. yeah. But to all है भाई, it is basically back to square one वाला चीज. If it ends this way, that is in the last 40 seconds, is it a handball? नहीं. मैं होप कर रहा हूँ कि यार अभी क्रिस्ट आ जाए, मजा आ जाएगा. I'm again neutral people. एक सेकंड, what was that by Araujo? Like, what was he trying to do? What was he doing? No clue. Was he I think- trying to play in a player? मतलब, why did he head it in that direction? I think that should be it. 4 minutes are up. Yeah. तो फतेह What भाई, a day. again उत्कर्ष, Europa अभी League, बहुत what a day. Fateh has been right from the beginning, and he supports Inter Milan, and he has a soft corner for Jose Mourinho because of obvious reasons, and that is What why. happened to Roma versus Salzburg? Yeah, वो दिखा रहे हैं भाई इतना. I have not got a chance to even take off my eyes at all. Yeah, exactly. Looking at the I match and forgot looking at about the that chat. तो let me just take a look. मैं ट्राई कर रहा था कि यार वही प्रॉब्लम होती है when TV is there, I can follow multiple matches. Now that I'm watching it online, I can follow only one match. Yeah. तो Roma's lost. How many? Salzburg won. We'll come to the other fixtures, don't worry. भाई हो गया भाई, 2-2 हो गया. The match is over people. अच्छा, इसलिए फतेह पूछ रहे थे, got it. But कोई नहीं भाई, everyone in the chat उसी बात पर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए हो सके तो. And remember, it's just the first leg. बहुत सारा रिएक्शन मिलेगा आप लोग को. Yes, I know Manchester United fans will not be particularly happy. How did Jules Koundé kind of not get a red card? How did we not get a penalty? But at the same time, why basically यहाँ पर हमें दिया गया yellow card with Casemiro? But at the same time, Barca fans यहाँ पर बोलेंगे भाई come on, it was an end-to-end game, but कहीं ना कहीं maybe just Fred also escaped. Fred also should have got a yellow card early on, and at the end of the day, it was what, 2-2. Pretty much, I would say, in the balance of things, Fateh first. मतलब, how do you summarize? मतलब, are you satisfied if you are a United fan and a Barca fan? No, I think if both said fans would probably feel that they could have won this game, and and that's why it's so perfectly set up for the next leg. Man U fans probably would have probably be more angry with their team because they had those chances in the first half. They were up 2-1 at that stage. Also, I think they couldn't kill off the game. Credit to Barcelona for coming back though. So I think I'm very happy with this game. I think this is what I predicted. That's why I wanted you to do this live watch along. I knew this was going to come. This was going to happen. अच्छा. Meanwhile, breaking news ये आया है, especially for Barca fans as well. Of course, the changes. Now, changes बहुत ही crucial हुए. First, Pedri. Now, this is huge news, people. Pedri going off early on. Comes Sergi Roberto. अच्छा, ये जरूर बोलूंगा. Sergi Roberto did the hard work, ठीक है. But apart from that, मुझे ज्यादा दिखा नहीं. It was more like De Jong doing that work. Apart from obviously Gavi, Joe, he was there on the pitch, but he got a late yellow card as well. Remember, Gavi was on a yellow. So Gavi might be missing the next leg, जो next week ही है. Pedri might be missing the next leg because of his injury. अब देखते हैं कितना बुरा injury है. That is huge news. But I think even bigger, Rafinha, the guy who was supposedly not in form and not meant for Barca, by getting that goal, very important goal. Lewandowski did not get a touch. Good for him. लेकिन Shrey, He had two shots Rafinha, also. they've been taken off for Ferran Torres. Should Barca have kept faith in Rafinha? I think they should have. Like, the game was at then crying for Rafinha to stay. Like, उस time जिस तरह match चल रहा था, like Barca was dominating. Rafinha putting the balls into the box was a big factor. Like, जिस तरह end में भी last के extra time गया added time. इस time पे अगर Barca ball pump in करते through Rafinha, that United struggle कर रही थी from crosses. तो आई थिंक थोड़ा सा मुझे समझ नहीं है Xavi की अब, या तो क्योंकि आई थिंक लोगों को ये भी याद करना पड़ेगा कि बार्सा के लिए यूरोपा लीग प्रायोरिटी नहीं है. वो यूनाइटेड अपोनेंट मिल गई, प्राइड है, बिग मैच है दो हिस्टोरिक क्लब्स के बीच में, तो दे गिव देयर ऑल. बट टू बी ऑनेस्ट, Xavi is looking for the league because Europa League no Barca fan will care. But अगर वो लीग जीत गए, he will already be a big part for the legend for their fans because इतने साल से Barca have not been the Barca we know. लीग में ऑलरेडी द पॉइंट टैली दे हैव गॉट इज अमेजिंग, एंड जितनी उनकी रियाल के ऊपर लीड है, जो टीम्स ला लीगा में है, नो डिसरिस्पेक्ट हियर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से,
it doesn't look like the league is going to go away until एक Tottenham Hotspur यहाँ पे हो जाए. तो इसलिए मुझे कहीं ना कहीं यही लगता है कि they're going to win the league and league is the most important part. तो इसलिए अब रफीना को शायद वो लीग के मैच के लिए बचा रही है. तो that could be the reason, but again only 10 minutes were left. What's going to make a difference? And I think they should recover Rafinha, but other than that I think still the match is in balance and anything would happen at Old Trafford. कहीं ना कहीं ये भी हो जाता है ना, when you have a strong bench and you know you are at home, maybe आप ज्यादा चाहते हो Xavi being Xavi क्योंकि he has played in the Barcelona sides of the मतलब best of the best side. कहीं ना कहीं I think he's one of those. मुझे लगता है that he's like नहीं, we can't go for fresh legs. That is what we went for. Ferran Torres again. Yes, बहुत question marks थे with Alonso starting. Let's be honest. Yes, Alonso stood out in this match. क्यों? Yes, he was substituted. He was one of the first substitutes along with Alba. Alba was yellow carded. Alonso, it was Rafinha's free kick, which rather corner. Alonso at the far post scoring a goal, or that is what Alonso thrives on. ठीक है, again बहुत shocking था कि why do you have a Malacia and a Fred marking an Alonso. वो बहुत shocking था. In fact, throughout the time Alonso was there on corners. On the other hand, Fateh, Alonso kind of, I know he went off after that, or of course the reason being that Rashford, clearly दोनों ही बार Fateh, it was Rashford who got the better of Alonso, right? Absolutely. So, I think that 1-1 was totally Rashford. Alonso totally got obliterated there for pace. Correct. तो ठीक है, I understand. लेकिन when you have so much talent on the bench, which Barca had, maybe that is why Xavi got tempted. On the other hand, Manchester United एक ही change किया यार, एक ही change. मतलब I know they didn't have a strong bench इस बार क्योंकि they had Lisandro suspended, Sabitzer suspended थे. But if you are Manchester United at point जब आप 2-1 हो, would you not say that maybe Ten Hag should have been a little bit more careful about it? I know he got Weghorst playing as CDM almost towards the end, लेकिन were you disappointed if you're a Manchester fan not being able to keep that lead? As a Man U fan, absolutely. I think you should be disappointed, and they've just shown that that Casemiro error. Not only does he make the wrong pass, but he doesn't then mark Lewandowski as well. I think he could have probably gone, and probably had a touch there as well. So I think that was a massive error by Casemiro. And they were winning at 2-1. And we had that moment where Casemiro and Varane came out and they were trying to bully Xavi and whatnot. And I think they just sort of lost that composure that Man U needed at 2-1. बिल्कुल. It's time for Pablo Torre. Nitin Kumar बोल रहे to step up in absence of Gavi and Pedri at Old Trafford. Yeah, as in definitely. As in there definitely is on. On the other hand, पता नहीं, मतलब I know Kessie, by the way, मैं बोलना चाहूँगा, has done decently in this match. I think Kessie नहीं था कि यार he kind of got beaten. For me, Sergi Roberto. I have a strange feeling it might be Sergi Roberto playing in midfield with Kessie and De Jong. मुझे लगता है in the second leg, and it might not be Pablo Torre, लेकिन he'll definitely be on the bench. अब लगते हैं Ten Hag cooking, yes, absolutely. Or again, coming back to the point, Ten Hag also got a yellow card. Remember, people. और उसका reason भी था. Now the moment. Of course, Jules Kounde got a own goal, technically speaking, right? Or of course, Rashford का ही moment था. But Shrey, come on, let's be honest. Jules Kounde got one off, right? As in, don't you think he was really, really unlucky? I think Jules Kounde really had to have a yellow card at least for that one, and free kick should have been awarded to Manchester United. But जैसे अंकित भाई हमने कहा like हम subjectively हम कह सकते हैं कि Rashford have gone, but ये subjective term हो जाती है and they go by the rules. और अगर एक centre back cover कर रहा है so they cannot give a red card. But that should have been a foul and a free kick. But VAR के rules है कि until it's a penalty or a red card, they cannot come back to the play. So again, it's not going to happen. But again, I think it was not that big of a call, sadly, because in the end, अगर वो call back पे होता है, वो free kick ही होती है United के लिए, and red card तो नहीं होता. अगर रेफरी रेड कार्ड देता तो वार ओवरटर्न कर देता. इतनी बड़ी कॉल भी नहीं है लाइक कि यूनाइटेड को एकदम ही बहुत बड़ी कॉल मैच का एकदम चेंज कर दे. मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी कॉल है कि वार बड़ा नाम हो जाएगा. जैसे आर्सेनल के मैच में था कि गोल गलत दिया गया, वो अलग होता है. आई थिंक दिस इज नॉट दैट मच ऑफ अ बिग थिंग. अच्छा मैच हुआ है. बोथ टीम्स हैव प्लेड रियली वेल इन दिस मैच एंड आई थिंक दे शुड बी कॉन्फिडेंट. ओल्ड ट्रैफर्ड पेड्री इस मैच में अवेलेबल नहीं होगा. ओल्ड ट्रैफर्ड में बारसा स्ट्रगल अगेंस्ट लो ब्लॉक हमने इंटर के खिलाफ भी देखा है. ओल्ड ट्रैफर्ड a stadium that has been fortress this season. Like teams have scared to go there. I think I'm still backing United to knock them out because of this result. Okay, interesting. Yeah, result wise, I think United के लिए definitely is a favorable result. As in the confidence of scoring twice against Barca. जो Barca is defense कर रही है. I know Europe में they have been conceding over the last year. लेकिन by 7 games in 21 league games is unheard of in modern day. And that is what Barca has done despite it being La Liga, with all due respect. Rafinha, man of the match after today's match. I think Nitin Kumar,
आप अगर मुझे पूछते at 68 मिनट we all would have gone for Rashford, right? So Fateh, I would लेकिन still go for Rashford. you still go for Rashford? हाँ मतलब but after 68 minutes क्या Rashford इतना दिखा? I'm just asking, like compared to the first 60 minutes. That's why I'm going that way. Yeah, that's a good point. Yeah, थोड़ा सा last I 50 thought that minutes see that is where I thought that Ten Hag could have kind of gotten more could out. have, yeah. Like I know again bench weak थी काफी बोलना पड़ेगा. Like it's telling for me that Harry Maguire is not playing such an important game even as a substitute when Luke Shaw is playing centre half or jab when you want to protect a lead. You know, it's really telling for me. For me, him making Weghorst एक central defensive midfielder in the latter part of the game क्यों? क्योंकि कैसेमिरो येलो कार्ड में था already और प्लस वो डिफेंड कर रहे थे लीड राइट और डिफेंड कर रहे थे टू नॉट concede a lead in fact. तो उस समय not getting on a Harry Maguire in fact even to change the momentum to change something. मतलब Fateh, what do you think about that part that has Manchester United like one thing होता है ना in hindsight कि यार मतलब if only Garnacho could have gone earlier, they could have got that extra goal maybe. As in, or am I being like, definitely Ten Hag tactically did the right things. No, I think overall he got most things right. Just the manner to manage a lead, at a stadium like Camp Nou. I mean, it's very easy to say, oh well, do this or do that, but I mean, this is a very difficult stadium to go to and get a positive result like this. So I wouldn't be too harsh on Ten Hag. Although yes, I think he left his substitutions a bit too late. I think Xavi made them at the Only right one time. substitution. Oh, I understand Yeah. weak bench जो पुदिन भी बोल रहे Hmm. हैं, but कहीं ना कहीं I think that किसी कभी कभी वो था momentum, time wasting वो सब चीज बोल रहा हूँ मतलब Hmm. maybe that would have also helped sometimes, which I know in a way it backfired क्योंकि Rafinha wasn't happy. But talking about other games यार मतलब quickly guys most surprising result Fateh and Shrey for you all. For me, I think it has to be Braga nil, Fiorentina 4. I think Braga had a man sent off. Jovic has scored for Fiorentina, but like you said, I mean they're one of the better Portuguese teams, They and are for them to in terms of lose big nil games. 4 at home, massive result. Yeah, just to kind of quickly show before ending the stream, भाई again people do not forget to like the stream. आप लोग भी बोलिए आपका man of the match कौन था in Barcelona and Manchester United, and do let me know what do you think about the second leg. But yes, or this is Braga Fiorentina. That was a huge result for Fiorentina. Jovic, people know it. Cabral, obviously people know that he was, if I'm not wrong, the replacement. Yeah, he was the replacement last after Vlahovic left, right? So Yeah. that is Yeah. interesting that they have got that. Shakhtar getting 2-1 after Mudryk obviously left them. Important result for Shakhtar. Interesting result. Roma losing to Salzburg. Now that is I think a Yeah. painstaking moment for Roma and Mourinho fans for sure. Like in Ajax being held by Union Berlin 0-0 at home. Union And I Berlin think favorites. Utkarsh, I think, mentioned that Union Berlin were the better team there. Yeah, that's great. Thanks man, thanks. Of course, we know what we are वाला चीज मैं तो गाना शुरू कर दूंगा. Again, हम है नहीं लेकिन वही है. Positivity. Putting the idea was positive, but thanks a lot. Again, shout out to Sports Hub. Even in absence of Pedri and Gavi, we have good bench of midfielders to step up, but we must not change our back four of Balde, Christensen, Araujo, or Kunde. Otherwise, यार पता नहीं. To end the stream again, coming back by Shrey and Fateh. Kunde man, like I know he grew into the game, but don't you think like there was it was not an usual Barca defense, Shrey? Matlab, do you think that it was Alonso only the lack of pace, or do you think Kunde also should be held accountable? I think Kunde for me, Ankit, is a young player as well, and Kunde is a player that I think defensively has a bit of weaknesses in him as well. Attackingly is also fine as well. So I think you have to understand he's a young guy who is adjusting and he will take some time. So I think I'm calm with him. Marcus Alonso, we all know, like Chelsea fans know him in and out, and I think we will have told any Barca fan or scout that Alonso cannot run. Like Alonso was a player, Ankit bhai ko bhi yaad hoga, Daniel James used to toast him every time he used to play. Like 2 बार अलोंसो और डैनियल जेम्स का मुकाबला हुआ है, दोनों बार पेनल्टी मिली है मैनचेस्टर यूनाइटेड को. तो मार्कस अलोंसो तो हमें सरप्राइज भी नहीं होना चाहिए, और आई थिंक दैट इज व्हाई नेक्स्ट लेग में दे हैव टू थिंक वेरी हेवीली. लाइक Marcus Alonso against Marcus Rashford is a battle you don't want to really have. Like Marcus Alonso and Marcus Rashford, Alonso will be on absolute toast. तो इसलिए आई थिंक Xavi will have to change that. क्या आप Alonso के लिए बैक 3 खिला सकते हो to protect him more? Now again that depends on the manager as well. अब अगले मैच में बस अंकित भाई मैं यही बोलूंगा अगले मैच के बारे में कि अगले मैच में जरूरी होगा जावी की मैनेजमेंट स्किल. नाउ इट वोंट बी अबाउट फॉलोइंग द बार्सास फिलॉसफी, वहां जाके अपनी फुटबॉल खेलना. इट्स अबाउट टैक्टिकली आप कैसे टेनहाग को बीट करोगे. यू गॉट टैक्टिकली आउटकास्ट बाय इंटर मिलान. आप बिग गेम्स में अगेन यू वर कॉट आउट
Can you do something big at Old Trafford? Can you play back three? Can you even put Marcus Alonso out of the team so that you can put someone that can handle Rashford? That depends on Xavi. But agar Alonso versus Rashford hua, it could be a massacre in terms of Alonso. Well, who knows that they might actually go that way. And of course, remember there's a Christensen also who can become your third center back if that is need. And of course, वो शुरू करता है generally. Archit बोल रहे हैं Gavi is immature. यार Fateh, what do you think? As in, would you blame Gavi to get that yellow card? No. मतलब I know it was a. He works, like you said, you Ankit said that he's a workhorse. We saw there, the kind of effort that you put in. I mean, come on. I mean, to say that one player's gotten a yellow, then you cannot get a yellow. I don't think so. I think he put in, the effort was there. And yeah, no complaints. I think fair enough. लेकिन वही है second leg में I know it's difficult, but still like I said, I think Sergio Roberto did a job. ऐसा नहीं कि Sergio Roberto did very badly or something. वो लेकिन he's not a Gavi in Pedri. We know that. Kessie, Sergio Roberto and De Jong is your midfield for next week. Simple as that. I think अभी मैं बोल रहा हूँ. With Pablo Torre being on the bench. Correct me if I'm wrong. Or like I said, Christensen can be your extra man जो हम देखे Chelsea fans especially, and even German Bundesliga fan भाई. Mönchengladbach में used to kind of go with the ball and actually a lot of times start as DM. That sweeper role खेलता था, तो you never know. That might be one of the tactics just Shrey just explained by the way. But by the way, great यार everyone भाई, again congratulations. What a game of football. भाई हम वेट कर रहे थे, एटलीस्ट ये डिसअपॉइंट नहीं किया जितना थोड़ा सा PSG बायर्न डेफिनेटली किया था. Yes, it's Europa League, but again, I know that there are other games coming on. Juventus game is about to start. क्या लगता है यार फतेह, going for Juventus win? Yeah, I think Juve will beat Nantes. But they're saying that, because of the 15-point penalty, we have to win the Europa League. But I don't think Juve have it in them to win the Europa League. Somehow, I just don't think as of now. And that 15-point penalty will probably be overruled. So they'll be back in the top. You think so? Wow. Yeah, I think they've done something where the son of somebody who's close to Juve is the lawyer now and the judge, and there's something, like very corrupt movements have been made. So yeah, that penalty will be off. और दो अच्छे मैचेस और भी है भाई फॉर पीपल और इंटरेस्टेड है. सेविया अगेंस्ट आइंडोवन एंड लेवरक्यूजन मोनाको भी है इंटरेस्टिंग. So that's going to be fun. Let's see. Bhai, again, remember, we are live tonight as well, later tonight. And of course, do not forget to subscribe to Shrey FC. Bhai, Fateh OP in the chat, Shrey OP in the chat, Hoja everyone. And of course, all the best, yeah, to all the Barca fans, to Manchester United fans. And of course, हम तो Chelsea fans always require all the best. लेकिन even Inter next week, भाई, huge week for Inter. हम वो भी कवर करेंगे. Coming days में बहुत सारा content आने वाला है. So hit that bell notification icon and the like button on both the channels. And remember, again मैं बोल रहा हूँ, जो पिछला स्ट्रीम मैंने किया था, it was by mistake live on both the channels together. It was not meant to be, but in a strange way it's good because वो reminder है saying that Almighty Sports Plus पे हम करते हैं फुटबॉल और क्रिकेट कंटेंट. ठीक है, तो if you are interested for both the content, that is always a channel. And for people who have unsubscribed just because you got 2 notifications, come on yaar, come on, get a live, come on. We're all always a fan channel for all to see, and hopefully you come back. But again, do subscribe to Shrey FC and Fateh OP in the chat. आज के लिए भाई I think it was ruled by Rafinha and Rashford. अब देखते हैं 2 hours next week, who knows, it might be a Lewandowski or it might be all of a sudden a Weghorst or Casemiro. Let's see, we'll wait for that. आज रात को Premier League chat. Stay tuned. See you all. Love you all.